ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ So I formally welcome you all on this 40th anniversary of the massacre of Sikhs in Delhi. Genocide of Sikhs in 84 is a black period in the history of India, free India. Before we start the proceeding, we'll have one-time Mool Mantra, followed by 1 minute silence, our homage to the departed souls. Then we take up the session one by one. So kindly join me for a Mool Mantra and seek the blessing of the Almighty. Ek Onkar Satnam Karta Purakh Nirvo Nirvair Akal Murat Ajuni Saibham Gur Prasad. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. And I request everybody to stand up for 1 minute. Let's pay our homage. Thank you. And when we think of 84 and what we saw in Delhi is unbelievable and any society cannot accept. In a free India like this, of something of this nature happening on a large scale. So while formally welcome you once again, who have joined us today, on this 40th anniversary of November 84 program in post-independent India, we are still struggling Kindly settle down. We are struggling with the question of memory, impunity, offshore acknowledgement of the event, lack of justice and repatriation, and large-scale collective and individual trauma. Similar programs follow November 84. In a different target community, which in a sense means nothing has been learned by the Indian society, state, politicians, and institutions. But the question keeps returning to our mind of all right-thinking citizens how to ensure an end to genocidal violence in India and elsewhere, why it is important to stand in solidarity with communities all over the world who demand an end to state-sponsored genocide against humanity. Not taking more time, I request our President, Ravinder Singh Huja, to say a few words before we start the proceeding. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you all for being here. As I pen down my thoughts, I am drawn
to a momentous chapter in our history, a chapter that pulsates with the beating heart of Sikhi. The intricate weave of our faith interlaces with threads of valor, resilience, and unyielding devotion. Events of 1984 are etched in the collective memory of Sikhs worldwide. Amidst the tumult, the defenders marched forth with love in their hearts, Simran in their breath, and Siddiq as their anchor as they entered the court of Shahidi. 1984 for us is not just an occurrence, but a visual where the echoes of courage resonate louder than before. It reminds us to be determined in our resolve for justice. Remembering Shaheeds is a Sikh tradition, and we remember 1984 Shaheeds. We draw our strength in their honor. We carry forward the torch of their Sikhi, for we are the torchbearers of their legacy, the guardians of their vision. We must march forward, undeterred and resolute, as saint warriors of light, as heralds of peace. How bad was 1984 can be demonstrated by me being chased by goons in a leading nursing home of Delhi, as my daughter had just been born, and I ended up sleeping in a locked room. I was lucky to survive. Yes, my thoughts cannot stray far away from the shadows of October 31st. The 1984 genocide weighs heavily on my spirits. Why do tears come so freely? Why does my heart ache as if the fires still burn? I see the faces of those who looked like my father, my brothers, my uncles, those who wore the same faith in their eyes, those who dared to talk with dignity. I see my mothers, my sisters, and my daughters in their strength, even as justice eludes them. And the tears flow still. They wait, yet stand undeterred, facing a state that betrays its promise of justice. I stand with them in spirit and memory because their only fault was being a Sikh, so I remember. These are words from Inikord's essay on 31st October 2024. What needs to be done? We've discussed that many times on this forum. Some of them are an apology in the parliament by the government, a serious effort to rehabilitate the victims, a truth commission,
punishment of the guilty, and the list goes on. 1984 started a pattern in India where state actors can facilitate and encourage massacres of minorities, and the guilty will walk away freely. We must stand together in solidarity against the events which jeopardize the very conscience of a community. We must forgive, but not forget. The guilty must be prosecuted, but as justice gets delayed, we get dismayed and disillusioned. Isn't it ironic that post-1984, it takes a single incident to change the perception of our community from patriots to Khalistanis? We will not let questionable motives and elements succeed who attempt to reopen our healed wounds and align us with the Khalistani separatist movements, potentially for political gains. The Sikhs, the Khalsa, is strong in love, it's strung in love. They are nirbhav and nirvair in our resolve. But we seek closure and justice. We must honor the memory of brothers and sisters we lost in 1984 by focusing on the future and building a community that is prospering with Gursikh youth, which is educated and committed to the Gurus. Sikh history is testament to our resilience and our capacity for forgiveness and growth. Let us carry forward the legacy of those who suffered, not through resentment or political maneuverings, but through a commitment of ensuring that such dark events are not repeated anywhere in the world. In unity and remembrance, we move forward, not just for ourselves, but for generations of Sikhs to come. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We now start with our first session. That's the violence, memory, and pains. I request all the panelists to kindly come up on the dais before I start reading their biodatas briefly. Mrs. Siddharth Vadarajan. Somebody can escort them. You have the Amarjit Singh Narang and Urship Daliaj. Out. And Air Marshal Bangu. As a token of our appreciation, we'd like to present a bouquet to all the panelists. The first panelist is Mr. Siddharth Varadarajan. He was born 1965. Siddharth Varadarajan is the founding editor of The Wire. He was earlier the editor of The Hindu from 2011 to 2013 and is a recipient of the Ramnath Goenka Award for Journalists. He has taught economics at New York University and journalism at University of California, Berkeley, besides working at the Times of India and the Center for Public Affairs and Critical Theory, Shivnadar University. Our next panelist is Urshi Bhutalia, born 1952, is an Indian feminist writer, a publisher and an activist. She is known for her work in the women's movement of India, as well as for such as The Other Side of the Silence, Voice from and from the Partition of India, and Speaking Peace, Women Voices from Kashmir. And these are all award-winning books. Known for co-founding Kali for Women, India's first feminist publishing house, and running Zuban Books, an imprint of Kali. Awards, she's won a lot of awards. To start with, she received the Padma Shri Award. She is also a visiting faculty member at the Ashoka University,
Vedka Scholars, Anant National University, and the Naropi Fellowship. Just a very, very brief I try to give it. Probably you all know about what all she's been involved with. The next panelist is Professor Amarjit Singh Narang. With a PhD from Political Science from University of Delhi, a former professor of political science, coordinator, human rights education and registrar, Indira Gandhi Open University. She has been fellow at Brooke, McGill and Queen's University and Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. Dr. Narang has authored and edited 8 books. His recent book on Akali Dal 100 was released last year. The area of interest includes Indian politics, ethnic studies, and Punjab and Sikh affairs. He is founding member of the Sikh Forum. We come next to our moderator, Air Marshal Paramjit Singh Bangu. Air Marshal Bangu was born in village Ukhlana, Hisar district and studied in Sainik School, Kunjpura. He joined Indian Air Force as fighter pilot. At the age after retiring, he had retired after 38 years of glorious service as Air Marshal. He was specially selected on a flying instructor and other military diplomat missions overseas in Russia. He was finally assigned responsibility of the West Indian Command of the Air Force and was responsible for national security of aerospace and offensive action if needed across the national border. President of India has been pleased to honor the officer with Vayu Sena Medal, Ati Vishesh Medal, and Param Vishesh Seva Medal. He spends his time in social activities, adventure camp, and motivational talks to the student and to the school and the college students. He is a keen golfer. I would now request the panelists to start the proceeding one by one, and starting with Mr. Saddam. Distinguished members of the Sikh Forum, Marshal Bhangu, my fellow panelists, and members of the audience. Today is really quite an extraordinary day. All of us, at least those who had reached childhood or adulthood in November '84, have very clear memories of where we were that day, what happened to us, what we were thinking, what happened to our loved ones, what happened to friends, family. And quite frankly, I had hoped for a different kind of 40th anniversary than what we are experiencing today. I was a student, college student, in November '84. I wasn't even in India at the time. I was in England. As you can see from my name and those who know me, I'm not from a Sikh family, not Punjabi. But that didn't make the pain any less. To imagine what is happening in the capital city of your own country, by those elected to protect citizens, under the watchful eye of men in uniform,
who all had taken oaths on the Constitution to uphold law and order, under the watchful gaze of reporters and editors, whose job it was to report truthfully, accurately, and honestly what is happening in society, what's happening in the country, what's happening on the ground. Under the watchful gaze of men and women in black coats, the judiciary, whose job it was to do complete justice and to hold the executive to account. All of this happened from October the 31st, 1984 onwards. It happened under the watchful gaze, and this I find particularly astonishing and unbelievable, that this could happen in a city that was then the site of visiting dignitaries from all over the world. So the entire gaze of the world leaders, world media was on India and Delhi at the time. And to then fast forward 40 years from now, to imagine that we are still, as a country, as a society, looking for justice, looking for answers, trying to ask ourselves, how do we ensure that this kind of crime doesn't happen again? And it is the large-heartedness of the Sikh who today, in her or his moment of pain and suffering, recognizes that what was visited upon them in November 84 continues to be visited upon innocent Indians of different religions under one excuse or the other. And no Sikh sees her or his struggle for justice when it comes to 84 as any different from the struggle for justice of the people of Malyana and Hashimpura near Meerut, who were killed in 1987 by members of the Uttar Pradesh Provincial Armed Constabulary, or the victims of Gujarat in 2002, or Muzaffarnagar or Assam. And all of you feel the same sense of that wound being reopened every time you hear a leader, a prime minister, a minister, a chief minister talking communal filth against Muslims in the current scenario, or against Christians, under one pretext or the other, spreading hate, trying to divide Indians. I don't think in November 84, even in the darkest of days of that time, we had imagined that 40 years from then, India would still be saddled with this kind of nonsense. Friends, this session is on violence, memories, and pain. The pain, as you know, never really goes away, because a genocide was attempted in one's own home, by one's own, not to put too fine a point, by one's own government. How does that pain ever go away? The pain stays and gets worsened because of the forgetting and the silence that surrounds us. The forgetting and the silence which followed, the ease with which people in this country and the world went back to their normal lives, the ease with which they then allowed similar crimes to be committed in their names. And the question of memory is really a question of who remembers and who forgets. I applaud the Sikh Forum for organizing this event today. But is it too much to hope
that when we come to the 45th anniversary or the 50th anniversary, such an event will be organized by a group, say, called the Hindu Forum, which decides that what happened in November 84 was an affront to India, was an affront to everybody who tried to act and commit crimes in the names of Hindus. Is it too much to hope for that by the time the 50th anniversary comes around, an event of this kind could be organized by those who themselves were involved in the commission of this crime? The state. Is it too much to expect that in a democratic India, in a country that swears by Baba Sahib Ambedkar and the Constitution, Gandhi, that claims to abide by a religious tradition going back thousands of years, is it too much to ask that the Indian state itself one day feel obliged, feel duty-bound to commemorate this massacre, to do complete justice, to apologize? Certainly back in November 84 and after, when all of us were struggling for justice, all of us were struggling to demand accountability, I for one never imagined that this would take more than 40 years. I never imagined that today we would be exactly in a similar situation to where we were then. In many ways worse, actually. In those days, you could have a prime minister talk in riddles, that when a big tree falls, the earth is bound to shake. There was still a certain hesitancy in openly maligning, vilifying, targeting the Sikh community in a continuous, unabated fashion. There was still some shame. But today, when you listen to the kind of statements, and it pains me to say this, but that the Prime Minister of India makes about Muslims, there was a calculation made in the 2024 election campaign, 110 out of 173 speeches that he made, there were vicious, direct, targeted attacks on Muslim Indians. And that tells you the distance, the backward distance that we have traveled since 84. Friends, it's not the crime. People often say, because cases are dragging on and we're going to have a session that's going to look at the problem of justice, the functioning of the legal system. And in many, many cases of mass crime, the fact is that the record of punishment is pathetic. Courts, police, all throw their hands up and say, we can't do anything about this. Guilty, walk free. But in my view, it's not the crime and the evidence of the crime that you collect which explains what happens. It's the cover-up. More than the crime, I urge you to look at all the evidence of cover-up. Because when you look at the cover-up, you then understand who had an interest in committing this crime and therefore who committed this crime. I can accept, for argument's sake, that a prime minister who was 2 days into the job, who had no political experience, was not paying attention to what was happening before his own eyes in the city. But a month later, 2 months later, 3 months later, to not want justice to be done to your own people, to not ensure that those who were involved in this violence are thoroughly investigated, that to my mind is unforgivable. The Chief Minister of Gujarat can say, I got a clean chit for what happened in 2002. But can he answer
why he did nothing to investigate the crimes which took place in Gujarat under his own watch, why it was necessary for cases to be moved out of Gujarat to have justice done. So it's the cover-up that tells you everything you need to know about the crime. And it pains me to say this, but my own profession, the media, was also part of this cover-up. You have to read media coverage of 84. The Sikh Forum has brought copies of Who Are the Guilty. It took, 2 or 3 weeks after the genocide for the facts to be brought out before the people of India in the form of booklets. This at a time when we had a thriving, India takes great pride in having a free press. But if you read the papers of those days, other than stray observations about how violence took place and the police did nothing, you will find no information at all about the presence of politicians like Jagdish Titler or H.K.L. Bhagat or Sajjan Kumar in the newspapers of the day. You will have no evidence of the fact that the police allowed the massacre to happen on its own watch. And I cannot think of a bigger failing than what the media did at the time. Worse, I would say that sections of the media then were also enablers in spreading rumors, spreading hatred against Sikhs. You recall the kind of coverage that took place throughout 1984, blaming ordinary Sikhs for acts of terrorism, blaming ordinary Sikhs for the killing of Hindus in Punjab, helping to fuel and spread rumors of one kind or the other. And today when you turn on the television and you watch in these Godi channels, program after program, anchors, guests spewing venom and hatred against Muslims, you see, and before your own eyes, the role of the media as an enabler. And it also pains me to say that the judiciary and that category, unique category of Indian person known as a retired judge, they've also served as enablers. One man, Ranganath Mishra, who was entrusted with doing the kind of work that PUDR did in 2 weeks. Justice Tarkunde, Amiya Rao, there were 3 reports of this kind that came out. In 2 or 3 weeks, they gathered all the evidence that you needed. And it took Ranganath Mishra, God knows how long, to decide that nothing could be found. He then goes to the Rajya Sabha. This is the caliber of person we're talking about. There seems to be a special place from where these kind of gentlemen are selected to do the job of whitewashing. But I don't want to fault any 1 or 2 or dozen individuals, because the Indian Constitution gives the higher judiciary in India the right to do complete justice, to intervene and take stock when there is manifest injustice happening before your own eyes. And here, sadly, the names of those who have distinguished themselves is few and far between. I'm thrilled to see copies of Justice, the Muralidhar bench judgment in Sajjan Kumar, which has redeemed to some extent the image of the Indian judiciary. Not just because he delivered justice and ensured that one of the guilty of 1984, the Congress leader Sajjan Kumar, was sent to jail where he belongs, but also because the bench saw the connection that we all see before our own eyes between November 84, Gujarat 2002, Muzaffarnagar, the violence before and the violence after. That there is a system that was put in place in November 84, and unless that system is uprooted, destroyed, and the guilty, those who engineered and designed and implement the system, are punished, we will always be condemned to repeat these kinds of acts of monstrous violence against our people. I want to end just with another thought.
A few years ago, there was the controversy about creating a police memorial in Chanakyapuri. And a lot of the discussion focused on the design. What kind of memorial is this? It looks ugly and so on and so forth. And me and some friends were discussing that there should be no memorial for Delhi police until Delhi police is held accountable for what happened in November 84. How can you memorialize police in the capital city of a country which allowed, if at all there should be a memorial, there should be a memorial to the victims. And the police should be forced to come there and apologize and lay a wreath and pay tribute to the memory of those who they allowed to be killed. Let us live and hope and dream and fight for a day where this kind of a memorial would be possible in a new India, and where it will not be left to the Sikh Forum to remember and pay tribute to the memories of those who died, but that Hindu forums and government forums and civil society forums in large number would share this burden, share this pain, and together we then find a way to move ahead. Thank you. I think he has forcefully borrowed the points. I request the second speaker to kindly come up on the dais or from there wherever she wants. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਓ As Siddharth said, we are marking 40 years of 1984, and the memory of that time does not go away easily. I was a young woman then, and I was in the India International Center when we got the news of Mrs. Gandhi's assassination. At that time, there were no cell phones or anything. So it was through a conversation among drivers in the parking lot as I went out to fetch my car and drive away that I got an idea of what had happened. There was no confirmation. There was a very strong rumor, but then some of the drivers had heard it on the radio. And I remember going home that day full of fear for what might happen socially, full of fear for what might happen personally, full of fear for what might happen to our neighbors and to everybody around us. By the evening of that day, this city in which I had grown up and spent almost all my life after my parents moved here from Punjab, had transformed into an ugly space of violence. And it is really difficult to imagine it now for those of us who haven't seen it. But the fear was palpable. You could hear people shouting on the streets. By the next day, you saw buses burnt and lying on the streets. You saw tires which were on fire. And we came to know of the massive scale on which people had been impacted, killed in the places where they lived. One of the remarkable moments of that time, which I think is also worth remembering when we recall these memories, is of the speed with which almost the next day civil society groups came together. So it was possible for civil society to mobilize at a time when there were no cell phones and very few ways of communicating with each other. Civil society groups came together in the form of gurdwaras who set up langars, who started to collect food, also in the form of a very large group called Nagarik Ekta Manch,
with whom I worked as a volunteer. And Nagarik Ekta Manch would meet in Lajpat Bhavan every morning, and hundreds of us would turn up, and we were given curfew passes to go and work in the different camps where people were. My responsibility was in the Shakarpur camp near Gita Colony, where, and it was that responsibility that pushed me as a young Indian woman to start to think about the ways in which such violence played out in our country, and to start to think about what had happened at partition. And it pushed me to study partition, because when we were working in the camps, I was given the responsibility to take down people's testimonies. And it's when I started listening to those testimonies that people kept referring to partition. And they kept saying, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ. And that made me think how the pain of a moment like this lives on in our society, in our families, and how we actually never really pay attention to it. My own family, a family of partition refugees, had carried with it the history of violence and partition, the history of division, and despite the fact that it was an alive history in my family, I had never paid attention to it. I had taken as truth what was taught to us in our schools and colleges, that was the truth of partition. And that was only a partial truth. It was 1984 that pushed me to look back at partition and to try and uncover the histories of grief, of violence, the histories that remained hidden, the histories without which an understanding of a moment like this in our history cannot ever be complete. I think those of us who saw 84, those of us who have inherited its legacies of pain and sorrow and grief and violence and the divisions it created in our society, we carry that responsibility with us to not forget that moment and to not let it be forgotten. I know that we have the Sikh Forum and many others, lawyers, civil society groups have continued to battle for justice for the survivors of that time, and that is a battle that needs to keep being fought. But I think there is also another battle that we as people who belong to this society need to continue to fight, need to continue to be involved in, and that is the battle to keep memory alive, to keep alive the memory of pain, to keep alive the act of listening to the survivors, not only about that moment when their lives were disrupted, but also about the many years that have passed since then, during which the survivors, many of them women, have actually shown us how resilient they can be, have shown us how women adapt to the most difficult of situations. And I think it is our responsibility to receive that memory, to listen to it, to keep it alive, to share it, because memory is another form of justice, listening and keeping the memory alive. Memory is a form of healing. Memory is also a kind of responsibility that we have on us as a society which should take part in keeping alive the histories which otherwise the state and conventional history will disappear from our lives. If you look at other moments in our history, Siddharth mentioned some. I will mention two different incidents, if one can call them that. One was some 5 years after 1984, the Bhagalpur violence that took place in Bhagalpur, in which about 1,000 Muslims were killed. And shortly after that, the 1989 Bhagalpur violence, and shortly after that, the 1991 moment in Kashmir, where two villages, Kunan and Poshpora, were subjected to a search and seizure operation, and where a large number of women were sexually assaulted during that search and seizure operation. In recent years,
After the 2012 violence in Delhi, where a young woman was sexually assaulted on a moving bus, young women from Kashmir who had been completely oblivious to the history of Kunan Poshpora, because other than the newspapers in which that history had appeared, it had disappeared from pretty much all easily accessible public record. It was the 2012 violence that pushed these young women lawyers to start exploring their own history, to start asking the question that when we hear of sexual violence in the capital city of Delhi, the entire world gets to know of it, but what about in our own backyard? What happened then? And one of them phoned up the other one and said, "Do you remember Kunan Poshpora?" And from that, started an exercise of recovering memory, talking to the survivors of that violence, many of whom had died, which eventually resulted in a book that records that moment, and a book that is owned by all the survivors of that time as their own history. And I think this is a responsibility we carry, which many of us in our separate ways have done. The Sikh Forum has created an archive. Many others have created documents and different forms of witnessing, photographs, and so on and so forth. And I think one of our responsibilities also is to try to find a way in which that valuable material can be linked together, can be accessible one from the other, so that these multiple histories are available to us. I want to add one last thing, that in recent years also, another history of 84 has begun to come to light, which is a very disturbing history, and that is the history of sexual assault of women during 1984. Many of us who worked with the victims, with the survivors of the violence at that time, and I can see people in the audience who were there with all the groups that worked, this was something we did not see, even though many of us came from feminist groups and were extremely alive to the ways in which histories of sexual violence are very much part of genocidal moments, very much part of sectarian violence, but we did not see it apart from an incident or two. In recent years, there has been some uncovering of these histories which suggests that it happened on a much larger scale than we actually thought. And I think although the uncovering of such histories may be very uncomfortable for us as a community, because histories of shame are often just kept aside, and they may be very difficult histories to uncover, because the women themselves who have lived through that moment would not only want to not remember it often, but possibly do not even have the words to describe it, the vocabulary to talk about it. So how do we as a society start to address this deep silence in our history? How do we bring it out without making the women vulnerable, without letting it impact their lives? So the recovery of the histories of pain is not an easy job. It comes with a lot of not only responsibility, but ethical questions that attach to it. And I think at this moment, when we are 4 decades into this history, it is both a moment when we should not allow ourselves to obliterate this history if it really exists, but we should exercise both caution and sensitivity and empathy and responsibility in recovering it. And once we have done that, we need to see how we can put that out in the public without making people vulnerable, people who have lived through that time, and that is another responsibility. So the whole question of doing work on memories of pain and suffering is not something that has a finite end where it can be done once for all and done and dusted and put away, but it is a bit like, as I have sometimes said in the past,
like starting to peel an onion. When you start it, you take off one layer, another layer emerges, and until you get to the heart, which is the core of it, which holds also many, many things inside it. And I think as a society, perhaps that is one of the responsibilities we need to carry forward. I will end here by thanking the Sikh Forum again and thanking all of you for listening. And I hope that we are able to take this particular part of our search forward as well in the future. Thank you. Well, thank you, Rishiji. You covered a lot of areas. It's for the information of all. We have a website, the Sikh Forum, newdelhi.org, which is undergoing upgradation, and we are trying to cover up and post the load with information about June 84 and November 84. There's going to be video recording and audio also in times to come. The intention is to keep the public and the youth in touch with the realities of June and November 84. So it will be, it's already getting upgraded gradually, but we will be doing it fully within the next couple of months so that everybody can be benefited. Thank you very much once again. And we have the third, our Honorable Dr. Namadji Singh Naren. He is a founding member of the Sikh Forum, under whose hand a lot of things have changed and still are changing. Thank you. Thank you, Pratap ji, and thank you, Chair. Let me first say that because of certain personal reasons, I was not in a position to make even articulated extempore presentation. Therefore, what I have done is made a written statement which I'll read, and wherever required, I'll translate that in Punjabi also. And first, for the information of my co-panelists, I am one of those who on the night of 31st October was on Ring Road riding my scooter. So I am one of the lucky persons who survived, and also I am one of those who in our younger age at that time ideologically were committed to Marxism and socialism, and then became Sikhs and became founders of the Sikh Forum, because the cause is not only for the Sikhs but for a society as a whole. Chair, I think if I take 2 or 3 minutes extra, you'll excuse me. You see, much has been said, and पिछले 40 साल तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੁਝ 2 ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇयर इज अ कॉमन सेइंग दैट टाइम इज ग्रेट हीलर। आम तौर पर कहते हैं ना कि जख्म वक्त जख्म ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, but some wounds don't get easily healed unless treated well and in time. Maybe not in body, but those wounds remain in memory and keep on hurting the conscious. Such is the case for Sikhs about the decade of 1980s. मैं सिर्फ 84 ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 80s 1980s ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, but things are interlinked, so I'll make them. At least for the generation then old enough and able to see, feel, understand and remember. ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬਟਾਲੀਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਮਝੀਆਂ
ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, but also for the younger generation conscious of their identity and future. Every Sikh worth its name of that and subsequent generations continue to feel the pain of those years and deep hurt and suffering of indignity, humiliation, and loss of pride. Why? First, First, on the account of attack on the holiest of their shrines, the Harmandir Sahib. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਫ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਸ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਮੈਸੇਕਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਨੰਬਰ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਈਵਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਫੋਰਸਡ ਆਊਟ ਔਨ ਦੀ ਸਟਰੀਟਸ। तो दोनों चीज़ें लिंक हो रही हैं। The pain is not only for those who suffer loss of their dears and dears, property, molestation of women folk, dignity, or any of such like. It is for every Sikh who remember, खास करके दिल्ली वाले, self-imposed arrest in their homes. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਰੈਸਟਡ ਹਾਂ। आजकल digital arresting, this was a thought of arresting within their homes. Listen justification for the killings from the highest levels of governance. Siddharth mentioned it. Tolerated humiliation on the basis of false accusation and rumors. पानी जहर मिलाता, गड्डियां पार के आ रही हैं. Again, Siddhartha mentioned in this. So I'm not going into the details. Anyhow, commemoration of the 14th anniversary of horrendous events of 1904, while remind us and the society of the pain, suffering, and injustices, also gives us an opportunity to the state to address the genuine feelings of hurt and alienation of the Sikh community and give them a sense of fairness and justice. If not done, hardliners in Punjab and outside India can use it as an handle to revive juvenate radical agenda. I'll come to that later on. At the same time, this is also an opportunity for the Sikh community for some introspection and learning of the lessons. I'll touch on these points. Let me start with the first. Let me quote Kirpal Dhillon IPS, a Madhya Pradesh DGP ਸੀਗੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਐਨੀਹਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਕੋਟ ਫਰੋਮ ਹਿਮ। ਹੀ ਸੇਜ਼, the Sikh children who had been mute and terrified, there are ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, the Sikh children who had been mute and terrified witness, this was in 2006, he wrote. The Sikh children who had been mute and terrified witness to the brutal killings of their fathers and brothers, molestation of their mothers and sisters, and the plunder and destruction of their homes, have grown up to be angry and bitter young men. 2006 ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। The widows of the 1984 massacres, waiting patiently for over 2 decades of justice, are growing more bitter and despondent by the day, while their preparators of butchery roam free, some of them even occupying ministerial office. Evidently, the wounds of 1984 will not heal as long as stern action is not taken against those guilty of the carnage. ਇਹ 2006 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। No, this was written in 2006. Since then, another 18 years have passed. ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। Of course, organizations like Sikh Forum and some others, by providing relief and continuous fight for justice, Butalia, मेरे बहुत सारे colleagues उन्होंने देखा, मैं भी आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, they did tremendous job. Hats off to them. Right. Relief and continuous fight for justice. Activist lawyers like H.S. Fulka and his colleagues, with their sustained efforts to get some convictions, including for politically powerful, have provided some succor to the victims and the community. Yet, according to the information which is available with H.S. Fulka, till today, only 27 cases
have ended in conviction. Out of that, only 12 cases are conviction for murder. बाकी सब कुछ हाले 40 साल के बाद है. So therefore, as again, when speaking as Vardarajan said, Ahuja Sahab ne kiya कि Sikhs as a community, they have not taken it to that extreme end, but pain of 1984 persists in them. They do expect justice and treatment from their fellow citizens and the state. Already इस टेस्ट में सारा अवॉइड करता है क्योंकि इसके बारे गल हो चुकी है. Another statement from the then Home Minister of India. On 26 December 2014, the then Union Home Minister Rajnath Singh described the November 1984 anti-Sikh carnage as genocide. ये गल मैं भी कही थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल सेमिनार कही थी, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जेनोसाइड वर्ड यूज नहीं करते, सो दे अवॉइडेड, बट आई डिड इट इन ए बुकलेट इन फॉर 25th एनिवर्सरी जो उसी मनाई तां भी मैं गल कही थी. एनीहो, सो this description no doubt was appropriate, but also needs logical and appropriate culmination. Equally important are issues of Operation Blue Star, Woodrose, just in cases of fake encounters, involuntarily disappearance, and so on and so forth. 84 ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ closure is required. That needs appropriate closures. Government needs to understand that demand for justice is not merely about a healing touch for the victims and the Sikh community. It is the principle of moral rightness which ought to define the character of the society we live in. Yes, it is also a matter of healing touch and bringing the sufferers out of resentment, despair, and elusive justice. ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ second point ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. Election results in Punjab from 1997 onward, both for parliamentary and state assembly, had made it clear that voters of the state in general have come out of radical politics. Ahuja Sahab ne gal hint ਦਿੱਤਾ ਸੀ, in a big way, to the extent of rehabilitation even of the Congress. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ broadness ਹੈ among Sikhs, the position even of the Congress among Sikhs. The position of extremists had been reasonably eliminated. But within Sikh community, there also has come to scene post Blue Star generation. ये भी generation आ गई है, थोड़ा एक दोस्त ने भी लिखा है, generation ready to move away from the past events and prepare to let pass the tragic events of 1940, 84 and after. वो generation भी है ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ future ਹੋ ਰਿਹਾ. This, however, does not mean that the horrendous events are forgotten and are of no concern. Not only those have been firmly inserted in Sikh history, but also, if not redressed, these will continue to be a tool in the hands of radicals and extremists. This is a little warning to the state, not from my side, it's a general perception. थोड़ा सा मुझे example दे देना. Recent events within Punjab and outside India clearly show that radicals keep the wounds alive by highlighting the persistent failure of the government to address Sikh concerns and grievances like justice to victims of November 1984, no repentance on Operation Blue Star. कोई अफसोस किसी ने जाहिर नहीं किया. पिछे तुसी किताब पढ़ी होनी है आई सी दी रियल स्टोरी ऑफ खालिस्तान. उन्होंने राइटर ने अपनी इंट्रोडक्शन च लिखा कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ मीटिंग जो बैठे सी ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ. तो बुक इतों शुरू कर देने कि नारंग ने गल कही सी, तां करके मैं रियलिटी दसने कोई मंगे तो सही, रिपेंटेंस ही नहीं है तो व्हाट डू यू डू विद दैट. Operation Blue Star, unfair sharing, no repentance on Operation Blue Star, unfair sharing of river waters, agrarian issue, etc., etc. Community is thus kept in a sense of persecution going back to the pre and post independence events of discrimination and unfulfilled
promises. If fear रहेगा, अगर issues just नहीं होंगे. For various reasons, a section of the Sikh diaspora, including erstwhile disgruntled politicians, मेरे को डिटेल है, चाहिए तो मैं दे देंगा, have begun raising the demand of Khalistan. Among them, there also are refugees, many victims of police excesses and stories of Operation Blue Star. ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਕਟਿਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. And the number 84 Carnage. In Western liberal democracies, apart from freedom of speech and to propagate, they also are able to get support from a section of the media, and because of those countries' internal electoral politics are accommodated even by the governments. Roots of recent bitterness in relations with Canada and US can easily be traced to the events of 1984. I'm saying this with full sense of responsibility. 80 से जो कुछ है ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਕਮਸ ਫਰਮ ਦੇਅਰ. Recent reports from across the border suggest that Pakistan's ISI is continuing with its long-term policy of bleed India, and because of countries in current internal political situation, has stepped up to its activities of providing logistic and other support to militant groups in India, including Sikhs. In a recent article in Indian Express, मिसल 1 September 2024 की गल है, वंदना मिश्रा pointed out, I quote, please listen it carefully. These crises, जड़े मैं ऊपर mention किते ने, these crises were also part of simmering discontents that bubbled to surface in the farmers' movement. ये नहीं कह रही कि farmers' movement उस करके हुई, but they bubbled up in that also. It is clearly visible that in Punjab, in the prevailing environment of disillusion and agony, once again both radical and moderate politics is using extreme politics to eliminate competition. आपस में जो competition है ना, उन्हें दूर करने वास्ते they start using radical elements. She concludes saying, please listen again, once proud state is in need of closure, that eludes. Mark the words she is using very carefully. Once proud state is in search of closures, that eludes, and a resolution that is still missing. Okay. So coming to my last point, which is about control. मैं इतनी चीज़ तुम याद एक चीज़ तुम दसना कि B.R. अंबेडकर साहब का नाम लिया सी उन्हें सिद्धार्थ ने, उत्थों मैंने याद आ गया कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होया, उस वक्त B.R. अंबेडकर ने बहुत कुछ कहा सी. दो गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने. एक गल उन्होंने ये कही सी कि आज़ादी के बाद सानू इस गल का कोई हक नहीं है कि हर गल की जिम्मेवारी अंग्रेज़ों को दे दी. एक ट्रेडिशन है ना कि एवरीथिंग ब्रिटिश आर रिस्पॉन्सिबल, एंड टुडे एवरीथिंग बिफोर 2014 वाज इंपॉर्टेंट. सैकेंड चीज़ उन्होंने कही सी कि कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होए, वो कितना अच्छा काम करेगा ये डिपेंड करता है उन्होंने लागू करने वाले होते हैं. ये दो चीज़ें आज. This is the issue of Sikh politics and misuse of the noble concept of miri piri, fusion of religion and politics. Looked in proper perspective, the underlying idea behind the vision of miri piri has been that politics needs to be run with the sanction of religion. Please, मैं इन्हें आराम ना सुनना जो मैं कह रहा हूँ before reacting to that. The underlying idea behind the vision of Miri Piri has been that politics need to be run with the sanction of religion, and that for proper practice and protection of religion, community needs political power. Community political power चाहिए थी, पर किधर वास्ते चाहिए थी? अपने religion protection वास्ते. From this angle, in ideological terms, acquisition of power is not end in itself. Miri Piri दे वास्ते acquisition of power अपने आप विच end नहीं है, but essentially a means to realize the welfare of the humanity in general. Halimi Raj, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ Miri Piri ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and of the Sikh community in particular. In another way, it could be interpreted to mean that every act should be undertaken with a sense of religious piety. That is, again, spiritualization of politics, not use of religion for politics.
ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। But what has been the practice since the success of Gurdwara Reform Movement, also known as Akali Movement, and ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦੀ, what has been the practice since the success of Gurdwara Movement, also known as the Akali Movement, and the establishment of SGPC. SGPC ਬਣੀ, Akali Movement ਨਾਲ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? It is that any group of Sikhs, again an important point, small or large, interested in politics calls themselves as Akali and claim exclusive right to speak in the name of community. और सारे अपने ਨੂੰ अकाली क्यों कहते हैं? Historical consciousness among the Sikhs has led them to consider the Akalis as the legitimate inheritor of Gurdwara administration. Therefore, since the Akalis, since it was the Akalis, not the present day SCD of any time, Akali naam se usre jehdi agitation kar rahe si, since it was the Akalis who had liberated the Gurdwaras, therefore at any time there are so many Akali dals with prefix A, B, C, etc. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਪਾਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਅਦਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Therefore, at any time, etc., ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, etc. For long, so anyhow, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਲ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। With vast resources of SGPC, both human and material, communities' respect for high priests, the Jathedars, a well-lubricated machinery throughout the state to disseminate any ideology, any information, opinion in favor or against a party, a group of individuals, or anybody else. Control over SGP is very important, not only for religious purposes, but equally in the domain of secular politics. Why? No, this is why the elections, SGPC have been over-politicized. The elections are contested on party basis, not only on the issues of Gurdwara management, but also issues purely in the domain of secular politics. The candidates are selected on the basis of their loyalty and proximity to the party bosses. SGPC members, office bearers, and unfortunately, even Jathedars of Takhas owe their position to the party and supreme leaders in the party and not to the community. Sorry using this language, but even Jathedars owe their office to the party and within party, anyhow. So in their struggle for power, the factions and individuals leaders, to show each other down and play with people's emotions, are engaged in one-upmanship and no hold barred politics. This is what happened in 1980s. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ। And in one or two statements, Mr. Vardhaman, I don't know whether you remember or not, she used majority also has rights. Against whom? Secularism always say the rights of minorities, but she started using majority also has rights and started playing communal politics, and three were targeted: Assam, Kashmir and Punjab. Punjab, why? Because the Sikhs themselves have been using fusion of religion and politics. So ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਗੇਂਸਟ ਅਕਾਲੀਸ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਇਹ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਿਆਓ ਅੱਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਸਟ ਅਕਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐਂਡ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ, in this case I'm using name, Dr. Gyani Dayal Singh and Mr. Indira Gandhi met him. ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ, ਟੂ ਟ੍ਰੈਪ ਅਕਾਲੀਸ, ਟੂ ਟ੍ਰੈਪ ਅਕਾਲੀਸ। ਅਕਾਲੀ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਧਰਮਜੋਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਪੂਰੀ, ਕਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਪੂਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਪੂਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਟੂ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਅਕਾਲੀਸ ਐਂਡ ਮੇਕ them fools and declare them separatists. एंड अकाली उस ट्रैप में बड़े फंस गए और वो सारा कुछ हो गया। फिर लास्ट लाइन लैके मैं ख़त्म कर देना क्योंकि इतना और टाइम नहीं है। ओके, सो वर्ड अगेन मैं यूज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉलिटिक्स, द सिख लीडरशिप एंड सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी इफ नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं कह रही कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जाने अनजाने वो भी अपनी पॉलिटिक्स करके, इन ऑपरेशन ब्लू स्टार, assassination of Prime Minister Indira Gandhi and massacre of the Sikhs. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 84 ਵਗੈਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਖਤਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ बने रहते हैं। इस करके सानू अपने सिख पॉलिटिक्स पर भी नज़र रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप खुद पूछिए कि 1984 के कत्लेआम के बारे में कितनी फिल्में बनी हैं। अमू एक फिल्म याद आता है मुझे, सोनाली बोस की फिल्म। माचिस में थोड़ा सा जिक्र है 84 के कत्लेआम का, बट प्रीटी मच दैट्स इट। पंजाब में पंजाबी वाली फिल्म नहीं है, लेकिन जैसे खालड़ा पे फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की भी कोशिश की जा रही है। तो मेरा मानना है कि किताबों के ज़रिए, गाना, कविताओं के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं 2002 में जब गुजरात में कत्लेआम हुए तो मैंने एक किताब तैयार किया 2002 के बारे में, इसीलिए क्योंकि मुझे फिक्र था, मुझे डर था कि हमारे आंखों के सामने जो सब हो रहा है, इसको अगर हम आज कैप्चर नहीं करेंगे और वो भी एक परमानेंट किताब के फॉर्म में, तो शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद ये बात मिट जाएगी। और मुझे अफसोस इस बात पे आती है कि किताब भी निकला और उसके बावजूद भी इस चीज़ को मिटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तो दिस इज़ अ स्ट्रगल विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विन। दूसरी बात कि ये इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है और इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि 84 के कत्लेआम को अंजाम देने वाले आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके नाम अलग हैं, चेहरे अलग हैं, उनके पार्टी के निशान अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इरादा, तरीका, मंसूबा वो बदला नहीं है। बंटवारे की मानसिकता जो है वो पूरी तरह से हावी है, और जब तक ये लोग अपना काम करेंगे तब तक हम इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, 40 साल बाद 50, मतलब कि एक डायरेक्ट मेमोरी नहीं होगी, लेकिन हर तकरीर पे जब आप रिएक्ट करोगे, किसी नेता की तकरीर, जैसे आज हम सुन रहे हैं झारखंड से खुल के हिंदू मुस्लिम वाली बातें हो रही हैं, ये भी 1984 के दर्द को
ताज़ा कर रहा है, और इसलिए हम इसको भुला नहीं सकते. So I think it's very important to ensure that this is kept alive for this very reason, that the problems are all around us. I think all three panelists have given their views on what happened and why it is necessary for documentation and the need for introspection. I think for that, one full day session need to be given to Narang Saab, because he's written a book on Akali politics and what has led us to this kind of a situation. How the community got exploited into an event of Blue Star and followed by the assassination and the consequences of it thereafter. So community introspection is very, very important, and documentation through seminars, through hard books, through YouTube, everything is extremely necessary. I have been to Auschwitz in Austria, where the Jews concentration camp is located. That camp has been maintained till today, not for any revenge, but to remind the people what the particular community has gone through. Halanki, in Austria there are no Jews now, but Austrian government has maintained that. So record keeping in whatever form is very, very important. Other thing, in my opinion, which is very important is to know that India has changed in the last 40 years. India has changed in a huge way. Media, both print as well as social media and TV. You see what's happening in the last 15, 20 years. I am from armed forces. We never thought of ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन है. इकट्ठे खाना, इकट्ठे ट्रेनिंग, इकट्ठे दुश्मन से लड़ना, इकट्ठे जीत के आना. But today, even amongst the retired Hindu friends, sorry to say this part, but very dear friends, they don't hesitate to, the system has been polarized so much, like it was covered by Saji, that when a prime minister of a country can make a statement of what it was said, then you know where you are headed. Overall, the patience and the tolerance of the community, of the communities rather, of the nation has come down. This is a hard reality. It's a hard reality. Just 6 years back, a gentleman who's conducting classes for IAS, IPS training center in Rajendra Nagar narrated a situation where he had gone to buy, he was living here only, now in Chandigarh, he had gone to buy vegetables. At the vegetable vendor, there was a lady who was discussing, or rather in conversation with the vendor, bargaining on the price. And that guy is saying, madam, hum to garib aadmi hain, ye hai. So this gentleman made the mistake of interjecting into it. कि बेचारा गरीब है, मैडम आप तो लग रहे हो अमीर हो, ठीक है. So she asked him, who are you? आपको 84 याद नहीं है? What I'm trying to say is, the memories have not faded away. Environment has changed. Media, I would say, is more negative than the positive. The polarization at its peak happening. Our next generation of the community has to live in this environment. We all have to live in this environment and survive. The biggest factor of the Sikh community is resilience. Even having, pre-partition, in our history where there were time, during the Mughal time, there was a bounty on a Sikh head. You bring a Sikh head and you'll get so much of reward. These are realities. These are realities of today. Yet within that, and classical example is, I would say, with a lot of respect to Fulka Sahib, persistent
effort over so many years, which has culminated in some kind of a justice. And remember, 84 happened, thereafter, as Sir covered, Gujarat, Delhi the latest. What has changed? Nothing much. Nothing much. So when the state gets involved directly or indirectly, it's not a good thing for the future of the nation. Yes, we are progressing, our economy is going up, everything, but it's basically not good for the nation. So documentation is very important. In whatever form, conduct of seminars, remind the younger generation, they can read in their own time, translate into Singh, look at our own politics, what's happening. I'm saying Akali politics, the dominant politics. And look the way the nation has changed over the 40 years, environmental factor, media, polarization, patience less, tolerance less, all combined. This is the reality. Thank you very much, eminent panelists, for your contribution in the whole thing. And thanks, Sikh Forum. Thank you. Thank you very much. I think our appreciation is a set of books which we are going to give to all the panelists, and also a coffee table book on Rapab to Nagara. A copy is being given to all. I just want to show it to the audience too. This is a big book which was brought out by Mr. Nag, and this is also being given to all. Thank you, sir. Thank you very much once again. Now, am I audible? Thank you. Then we have Navkiran Singh ji, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ and he has also appeared in many international forums as a expert witness as well. So मैं इन्हां दे बारे च brief दस्सांगी and I also welcome H.S. Fulka ji, senior advocate, whom I have coined. I have coined a phrase, 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 I have coined
a phrase for Mr. Fulka, that he is an indefatigable spirit who is pursuing all these 84 victim cases since November 84 itself. And I really commend that, and I have an opportunity of assisting him for the last 25 years in pursuing our justice endeavor for all the victims of 1984. And I started my assistance to Mr. H.S. Fulka, Senior Advocate from the Justice Nanavati Commission itself. So till date, I am actively involved in pursuing all these cases on behalf of victims. Yesterday only Mr. Fulka had a press conference, and I had an occasion to join that press conference where he's released his video series of the aftermath of 1984 Sikh riots, and it was very well attended. And in fact, I should start with this, that Mr. Fulka made a call yesterday that at present, Supreme Court also should apologize to the victims. And that apology is awaited anxiously, and many victims were also there who related their traumatic experiences, the indelible marks which have left on their psyche, and they were breaking down while relating their horrors and the eyewitness account and what all they had witnessed. That is surely has, the memories can't fade away. The memories can't fade away. You have to touch their wounds and they will start bleeding. This is what I have witnessed yesterday, and for the last 25 years I have been witnessing. I have been a part of the trials also, and I really thank my senior, Mr. H.S. Fulka, to make me a part of his team. So I take now to introduce my panelists. I would start with Justice S.N. Dhingra, who had retired from Delhi High Court as a judge in 2011 for having been there for 5 years, and he was born on March 2nd, 1949 at Delhi. He joined as an advocate in February 1976 and practiced in the district courts and Delhi High Court in various streams of law. And as a district judge, Delhi, he honored his seat from February 2005 till February 27, 2006, before he was elevated to Delhi High Court in February 2006. And he retired as a judge from Delhi High Court in 2011. We cannot forget this was the first step by Justice S.N. Dhingra. I can only say that we all appreciate his grit, determination, and judicious mind and courage for having given a landmark judgment while he was in Karkaduma courts, where he happened to try a case involving 127 of the accused. Number of accused had since died, and there were 107 who were tried by Justice Dhingra, and when he was holding his courts in Karkaduma district courts. This is a landmark judgment which changed the course of future investigations in 1984. He's a highly versatile judge,
having rational and compassionate reasoning in appreciating the anti-Sikh rights cases, bearing in mind the genocidal aspect also, with gifted logical approach resulting in finalizing some of the most complex cases like Kishori Lal, and also the other also, when he was sitting as a district judge in the district courts. Similarly, in High Court also, he had an occasion to deal with some of the 1984 cases, and with same great determination and courage, he gave us landmark judgments while in High Court as also. And after his retirement in 2011, an SIT was constituted by Supreme Court, where he was heading it, and to initiate action on 12 listed cases out of 186, as 176 cases were finally closed, where he played a key role, resulting in starting proceedings against Congress leader Sajjan Kumar and others. He adopts a straightforward approach in pinpointing major lapses by the law enforcing agencies in all his observations while dealing with anti-Sikh right cases. They have been well recorded for all times to come. Justice Dhingra is based in Delhi, and we are really grateful to him for having come to share his few experiences as being a judge, and how he could, while going through the evidence on record, which was available at that time, but still he had that courage to find out the solution to the evidence which was only limited when it reached him. But then he had the courage to come out with such remarkable judgments, and we are really grateful to him for having paved the way for further investigations and for future course of action as far as justice is concerned in 1984 anti-Sikh right. Then I welcome Justice. And yes, the Congress leader. Yes, in 1995, he had an occasion of dealing with then most powerful Congress leader HKL Bhagat, where he declined his bail also, and he could not face the trial since he had this plea of his failing memories and dementia and all. Then he was declared as unsound mind and so on. I remember that day very well. When HKL Bhagat was arrested and produced in his court, there were 10,000 people in Karkadama court. All the entries and whole court was blocked. And HKL Bhagat had come with 100 lawyers led by the chairman of the Bar Council of Delhi. And they tried to overthrow Judge Sahab. But Judge Sahab stood firmly. He rejected the bail of Bhagat and sent him to jail in 1995. This is what we are asking today. He might have given it to us, not only might, he would have given to us in 1995 if some of our own Sikh leaders, the member of the Gurdwara committee, had not betrayed the Sikhs. Not only betrayed the Sikhs, even betrayed the court. And as a result of that, Justice Dhingra was superseded. His promotion to the High Court, both 2 साल Yes. वहाँ पे wait करनी पड़ी because of this reason, that how a judge could dare to order the warrant and arrest and send to the jail an uncrowned king of Delhi, which is HKL Bhagat. Justice Dhingra. So he is Justice Dhingra, who has joined us for this session. Now I welcome Justice Talwan Singh,
who also retired as a High Court judge. He is a senior advocate and former judge of the Delhi High Court. He has about 4 decades of judicial and legal experience. His illustrious career has been marked by unwavering dedication to justice, a profound understanding of the law, and a commitment to advocating for the rights of the citizens. He was born in 1961 and did his schooling. Thereafter, he joined SGTB Khalsa College, University of Delhi, and completed his master's in commerce. He earned an advocate diploma. He did his LLB from Meerut University in the year 1986. He joined Delhi Bar in 1986 and practiced as a litigation lawyer at High Court and District Courts of Delhi till April 2000. His practice areas were corporate laws, family laws, civil and criminal laws. He joined the Delhi Higher Judicial Services in May 2000 as additional district session judge. He was promoted as district session judge in December 2014 and served in Northeast and East districts till April 2017 and 30 Hazari courts till May 2019. He was elevated as a permanent judge of Delhi High Court on 27th May 2019. And he held his office as a Delhi High Court judge till, I'm forgetting. 3rd of June 2023. Yes, yes, very recent, yes, till last year. Yes. So I welcome you, sir. Now I advocate Navkiran Singh ji. He's come all the way from Chandigarh to join us for this session. He has been handling cases at different levels, starting from Supreme Court of India, Punjab and Haryana High Court and National Human Rights Commission, New Delhi, and Punjab State Human Rights Commission. He was appointed as a special counsel for the People's Commission, constituted by the Committee for Disappearances in Punjab, which comprised of a retired Supreme Court of India judge, Justice Kuldeep Singh, and 3 other honorable retired judges of High Court, Justice D.S. Tewatia, Justice Suresh, Justice Jaspal Singh, and represented the cases of human rights violation. He manages his law firm in Chandigarh, and he is also ably assisted and strengthened by his son and daughter, who has joined him as a. He stands out for truth and justice. He is the 2nd generation lawyer, and his father started his practice in the year 1949. And I had an occasion of handling Jagdish Titler, a Congress leader's case with Navkiran ji also in Karkarduma courts. And he was the one who would guide me at every step. This is how it should be done. This is how it should not be done. This is the way the things have to be said to the court, and these are the arguments and all. And which has resulted in our having the first step to initiation of full-fledged trial against Jagdish Titler in Rouse Avenue Court still. And he is now facing the trial. I welcome you, sir, for having joined us. Now, I start from Justice Dhingra. And, sir, I would request you to share your experiences and your approach to the various cases which you had an occasion to handle as a district judge and as a High Court judge also. Please, sir, I welcome you.
और 84 के संदर्भ में इस स्ट्रगल को देखने के लिए मुझे अपने अनुभव शेयर करने के लिए कहा है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये स्ट्रगल फॉर जस्टिस सिर्फ 84 का नहीं है। आज हर आम आदमी न्याय की लड़ाई में हार जाता है। और जो न्याय व्यवस्था हमने बनाई है, मैं कहूँगा हमने बनाई है, क्योंकि इस देश को चलाने वाले जनतंत्र में जनता ही होती है। और पहले तो ये होता था कि यथा राजा तथा प्रजा, अब जनतंत्र में है यथा प्रजा तथा राजा। तो ये जो है जनतंत्र के अंदर मैं ये कहूँगा कि जब तक जनता खुद आवाज़ नहीं उठाती कुछ बदलता नहीं है। अब 2 गांधी के मर्डर हुए भारत में, एक महात्मा गांधी MK गांधी और एक इंदिरा गांधी। दोनों के बाद एक मैसेकर हत्याकांड हुआ। पहले हत्याकांड को तो आज कोई याद नहीं करता। 14,000 चित पावन ब्राह्मण चुन चुन के घरों से निकाल के महाराष्ट्र में पुणे में मारे गए। 14,000। और उन 14,000 का उन दिनों जिक्र भी नहीं करने दिया जाता था, अखबारों में नहीं छपा जाता था। बाद में धीरे धीरे कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स, आप ब्रिटिश BBC, कुछ यहाँ इनके बारे में छपा, उसमें भारत के अखबारों में तो इसका जिक्र नहीं हुआ। उनकी ट्रायल के बारे में कभी किसी ने सुना नहीं होगा। महात्मा गांधी का मर्डर 30 जनवरी 48 को हुआ। ट्रायल के 6 महीने के अंदर नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। इसी तरह मिसेस गांधी का मर्डर 31 अक्टूबर 84 को हुआ और 4 साल या 5 साल लगे पूरी ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट तक जाने में और उनको फांसी दी गई। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में जो यहाँ नरसंहार हुआ पूरे भारत में, उनकी FIR भी तब तक दर्ज नहीं हुई थी जब तक उन लोगों को फांसी दी गई। बहुत से केसों की FIR कोई 96, कोई 97, कोई 98 में दर्ज हुई। तो इस न्याय व्यवस्था में जहां, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हर आदमी कानून के सामने बराबर है, हमने उस बराबरी की मांग के लिए क्या किया? मैं सिर्फ किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस कम्युनिटी में हुआ उसने भी क्या मांग की? 84 से लेकर के 88 तक कितनी ट्रायल्स हुई? FIR तो काफी दर्ज हो चुकी थी। लोग थाने गए, दर्ज कराई FIR, चलो कम अपराध में दर्ज की, किसी की नहीं की, लेकिन कुछ तो दर्ज हुई थी। 88 तक कितनी ट्रायल पूरी हुई? और यहां 88 तक लगभग
नीचे की अदालत से तो इंदिरा गांधी का मुकदमा खत्म हो चुका था, हाई कोर्ट गया, 88 में हाई कोर्ट में पेंडिंग था, फिर 90 के अंदर वो फांसी भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी फाइनल हो गया, और 90 के अंदर आपके यहाँ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिशें की जा रही थी। तो न्यायिक व्यवस्था का ये जो दोगलापन है, इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। 88 के अंदर मेरी एज ए सेशन जज भर्ती हुई थी। मेरे साथ 4-5 लोग और भी थे भर्ती हुए, उनमें एक थे श्री एस बल। वो HR भारद्वाज के बहुत क्लोज वकील थे और उन्होंने सारी जिंदगी रेवेन्यू के कोर्टों की काम किया था। और 89 में उनको स्पेशल जज पूरी दिल्ली का 84 राइट्स का बना दिया, पूरी दिल्ली का। वो 2 दिन पटियाला हाउस आते, 2 दिन 30,000 और 2 दिन शाहजरा, 1 दिन शाहजरा। तो कहाँ से ट्रायल होगी आप लोग इन अपराधियों की? 3,000 मर्डर तो दिल्ली के अंदर हुए थे लगभग। ये ऑफिशियल रिकॉर्डेड फिगर है, अनऑफिशियल तो 8,000 से 14,000 के बीच में कहते हैं पूरे भारत में। तो जब SS बल जी को बनाया गया स्पेशल जज, तो किसी ने कहीं कोई विरोध किया कि आप एक अनएक्सपीरियंस्ड, जिसने कभी क्रिमिनल लॉ किया ही नहीं है, क्रिमिनल लॉ की ट्रायल नहीं की, उसने क्रिमिनल कोर्ट का फेस नहीं देखा, उसको आपने स्पेशल जज बना दिया, क्यों? और इंदिरा गांधी के केस में किसको बनाया था? महेश चंद्रा जी, जो नीचे से मजिस्ट्रेट से ऊपर सेशन जज बने थे। उनको बहुत वाइड एक्सपीरियंस था। तो जहां आवाज उठनी चाहिए थी वहां नहीं उठी। उसके बाद 88 के 89 से 95 तक, 94 तक शायद वही जज रहे स्पेशल जज। तो किसी और जज के पास केस नहीं जाता था, सिर्फ 84 राइट के केस उन्हीं के पास। और अगर आप उनकी जजमेंट पढ़िए तो वो हर केस के अंदर एक पॉइंट ये होता था कि FIR बड़ी देर से लिखाई गई, और देर से लिखाने का वो कारण नहीं बताते थे, क्योंकि ये सारे एफिडेविट रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सामने अपराध जितने भी गवाह थे उनके पास सारे एफिडेविट गए थे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, किसने मारा, कैसे मारा। रंगनाथ मिश्रा जी ने भी ये नहीं कहा कि इनकी FIR दर्ज कर दो, उन्होंने कहा कमेटी बना लो जो इन एफिडेविट की स्क्रूटनी करेगी और फिर फैसला करेगी कि FIR होनी कि नहीं होनी। और रंगनाथ मिश्रा जी को क्यों जज कमीशन का वो बनाया? क्योंकि रंगनाथ मिश्रा जी चीफ जस्टिस बनने की लाइन में लगे हुए थे। और शायद आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा, एक बड़ा मशहूर केस है इमरजेंसी का हमारे यहाँ, जबलपुर STM केस। 5 सुप्रीम कोर्ट जजों की बेंच बनी थी, और आप उस बेंच के नाम उठाकर देखिए
तो आप देखोगे कि उनमें से हर जज वो था जिसको कभी न कभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने का नंबर आना था, हर जज। तो ये जो है बेंच बनी, बेंच ने कहा इमरजेंसी है, किसी का कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं, किसी को भी उठा के कभी भी अंदर कर दो, कारण मत बताओ, और जब तक मर्जी अंदर रखो। तो ये इसी पॉइंट को देखते हुए रंगनाथ मिश्रा को बना दिया। तो रंगनाथ मिश्रा जी ने कहा कि भाई कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, कांग्रेस के कुछ छुटपुट नेता थे जिन्होंने अपने लेवल पे इसको किया। रंगनाथ मिश्रा जी के बाद 3 या 4 कमेटी और बनी, जैन कमेटी, एक कमेटी को डिस्पो कर दिया कि जी ये ठीक नहीं बनी है, दूसरी कमेटी, दूसरी के बाद तीसरी कमेटी। तो कमेटियों के रिकमेंडेशन के ऊपर वो एफिडेविट जो 1985 में फाइल हुए थे रंगनाथ मिश्रा के पास, उनके रिकमेंडेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। किसी ने कोई नया बयान नहीं दिया था कि मेरे साथ अभी 1984 में ये हुआ। सबने अपने एफिडेविट पहले ही फाइल कर रखे थे, और जज साहब ये कह रहे हैं कि एफआईआर करने में बहुत डिले है। तो वो जो है, आप हर केस की ये एक कॉमन वो है। दूसरा, गवाह। एक हमारे सिस्टम में बड़ी यूनिक चीज़ है, यूनिक तो नहीं है क्योंकि हमने कॉमन लॉ सिस्टम लिया अंग्रेज़ों से। उसमें ये है कि जज को कानून का आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता। कानून किसको आना चाहिए? वकील साहब को। अंपायर, जज क्या है? अंपायर है। हमारे यहाँ पहले आज़ादी से पहले आईएएस अफसरों को, आईसीएस अफसरों को जज बना देते थे, और कॉमन लॉ के अंदर हम इनको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते ही नहीं है, ये कोर्ट ऑफ लॉ है। और इसके अंदर कहीं किसी जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सच्चाई की तह तक पहुंचे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 2 पार्टियां आएंगी आपके सामने, गवाह लाएंगे, आप गवाह को सुनो और फैसला कर दो। वो गवाह सुनो, फिर वकील की बहस सुनो। आपको कानून जानने की भी जरूरत नहीं है। मुझे कभी बड़ी हैरानी होती है जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं, जज जो हैं, वो फाइल पटक देते हैं कि वकील साहब नहीं आए, जब आए तो मुझे बुला लेना। और हमारा जो प्राचीन वो है न्याय की व्यवस्था थी, उसमें ये था कि हर जज पूरे शास्त्रीय कानून जो उस समय के कानून थे उसमें पारंगत होना चाहिए। ये उसके जिम्मेदारी है कि वो फैसला करे, सच्चाई को जाने। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। तो 93 तक, ये 93 तक, 94 तक बल साहब ने केसों में कि एफआईआर गलत है, एफआईआर डिलेड है, गवाह को कुछ याद नहीं है, ऐसे करके उनके केस में पढ़ रहा था। मुझे मौका मिला जब मैं 84 राइट कमेटी का चेयरमैन बना, तो उनकी सारी जजमेंट्स पढ़ने का मुझे मौका मिला। वैसे तो देखिए सेशन जज की जजमेंट हमारे पास नहीं आती, तो मैं बड़ा हैरान था। फिर इसके अंदर एक नई जो चीज़ मुझे देखी,
कि केस चल रहा है 10 आदमियों के खिलाफ मर्डर का, चार्ज फ्रेम हुआ है 5 के खिलाफ, बाकी 5 के खिलाफ चार्ज ही नहीं फ्रेम हुआ। और केस चले जा रहा है। न तो वकील ये कह रहा है कि भैया आपने 5 के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया, बाकी 5 कहाँ गए। और हमारी जो व्यवस्था है उसमें ये है कि हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है। हाई कोर्ट का जो है काम क्या है, सुपरविजन, कि नीचे की अदालतें ठीक काम कर रही हैं। 2 तरह से सुपरविजन करता है, एक तो जब उनकी अपील रिवीजन जाती है हाई कोर्ट में, और दूसरा वो खुद भी फैसले मंगा सकता है देखने के लिए। पूरे 84 राइट के किसी फैसले को हाई कोर्ट ने खुद मंगा के कभी नहीं देखा कि हमारी नीचे की अदालतें कर क्या रही हैं। '93 के अंदर मेरी करकड़ुमा में पोस्टिंग हुई, तो 94 के अंदर मेरे को 84 राइट का स्पेशल जज बना दिया, करकड़ुमा का, ईस्ट दिल्ली का। तो मैंने देखा कि एक कोई 150-200 मर्डर है, उनका एक ही केस चल रहा है। मैंने पूछा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कि भैया ये कैसे है कि हमारे कानून में तो 3 से ज़्यादा का अपराध एक जगह चल नहीं सकता, वो भी 3 लिंक्ड हो, ये 200 मर्डर का केस एक कैसे चल रहा है। तो कहते हैं कि एक ही FIR हुई थी 200 मर्डर की। मैंने कहा फिर आपका काम था ना इसको स्प्लिट कराना, कि आप हर ट्रायल, हर मर्डर की ट्रायल को अलग करवाते। अब वो 200 मर्डर में 250 मुलजिम, और वो जज साहब का ये रवैया था कि केस को बुलाना, हर बार 5 मुलजिम गैर हाजिर हो जाते, कभी 10 हो जाते, उनके वारंट निकाल देना और डेट लगा देना। वो बीच में आते कि जी हमारे वारंट कैंसिल कर दो, मेरे को ये काम पड़ गया था, ये पड़ गया था, उनके वारंट कैंसिल हो जाते, अगली बार कोई और 5 गैर हाजिर हो जाते। तो पिछले आप ये देख लीजिए 89 से लेकर के 94 तक ये सिलसिला चल रहा था। तो ट्रायल कहाँ से होगी, किसी केस में ट्रायल ही नहीं हुई थी। तो पहला काम मैंने यही किया कि उनको स्प्लिट करने की एप्लीकेशन मंगवाई, और वो 200 जो इकट्ठे मर्डर थे उनके 200 केस बनवाए, हर एक का चालान सेपरेट करवाया। अब उसके अंदर कुछ लोकल MLA थे, कुछ लोकल कांग्रेस के लीडर थे, HKL भगत जी भी थे, सारे थे। अब सबके केसेस अलग अलग होके ट्रायल होने लगे। कुछ एक्टिविस्ट काफ़ी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी जो विक्टिम थे वो तिलक विहार में इधर उधर सेटल हो गए थे, उनको एकोमोडेशन दी थी, क्या दिया था, कुछ को कंपनसेशन दी थी। तो बहुत से विक्टिम के तो मुंह पे ताला लगा हुआ था कि जी हमें तो मिल गया, हम अब नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट के कहने पे बहुत से विक्टिम पेश हुए। उनमें मुझे याद है कि एक एक्टिविस्ट थे मोहन सिंह, वो हर बार अपने साथ गवाह लेके आते थे। मेरे ज्वाइन करने के बाद, मेरे से पहले तो गवाही हुई नहीं, तो उनको ये उम्मीद हो गई थी कि अब गवाही होगी। मेरे एक असूल रहा है, ये 84-6 रॉड के लिए नहीं, शुरू से 88 से जब मैंने ज्वाइन किया,
कि मेरी कोर्ट में जो गवाह एक बार सुबह आ गया, उसने हाजिर लगा दी, तो वो बिना उसका गवाही लिखे, एग्जामिन किए वापस नहीं जाएगा। तो वो जो है, जितने गवाह आते थे उनको लिखते थे, और इस तरह 84 राइट्स की केसेस डिस्पोज ऑफ होने शुरू हुए। मैं डिस्पोज ऑफ इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम लोग केस डिस्पोज ऑफ करते हैं, न्याय देने का जो है काम मेरे ख्याल लगता है भारत में भगवान ही करता है। तो केस डिस्पोज ऑफ होने लगे, तो थोड़ा सा हलचल हुई कि कन्विक्शन हो रही है। तो एचके भगत का केस भी था, उन दिनों मेरे पास टाडा भी था। तो टाडा में मिस्टर कल्पना थराय थे, एनर्जी मिनिस्टर। सीबीआई ने उनको तो न समन जारी किया, न उनके खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन जब मैंने चार्जशीट पढ़ी वो, तो मैंने कहा भैया ये तो इन सारे मुलजिमों को हेड लग रहा है, उसी के घर में आके ठहरे, उसी ने फिर अपने गेस्ट हाउस में ठहराया, और आपने उसको मुलजिम ही नहीं बनाया। तो उसको मुलजिम बना करके समन किया। ऐसे एचके भगत जो है उनको खिलाफ भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। एक एफिडेविट था जिसके ऊपर, जिसको उनकी फाइल को खोला ही नहीं गया था। फाइल खोली, स्टडी करके उनको भी पहले बेलेबल वारंट जारी करते हैं हम लोग, तो बेलेबल वारंट जारी किया। तो जैसे फुल्का जी ने बताया कि कोर्ट भरा हुआ था, उनके साथ बड़े बड़े वकील भी थे। तो वो जो है, हमने कहा देखो ऐसा है, मेरा शुरू से यह रहा कि आप एमपी हो, मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट में हो, मेरे सामने आप मुलजिम हो। मुलजिम से ज़्यादा मैं आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। और ये बात वकीलों को भी पता थी, क्योंकि जब मैं जज लगा ही था तो एक महाराष्ट्र के एमपी पेश हुए, खड़े हो गए कि जी मेरे केस सुन लो। 10 बजे कोर्ट लगा। मैंने कहा आप कौन? कि जी मैं एमपी हूँ। मैंने कहा तो भाई पार्लियामेंट में एमपी हो, यहाँ नहीं हो एमपी, यहाँ आप एक लिटिगेंट हो, जब आपका नंबर आएगा ज़रूर सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे। तो वकीलों को ये था कि यहाँ जो है कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, सभी मुलजिम हैं जो फेस कर रहे हैं। तो उस दौरान मेरे से दो हाई कोर्ट की नज़र में और सरकार की नज़र में दो बड़े पाप हो गए। एक कि मैंने एचके भगत को जेल भेज दिया, दूसरा मैंने कल्पना थराय को जेल भेज के सजा भी कर दी। तो जब एचके भगत जी का केस चल रहा था तो उन्होंने बड़ी इंक्वायरी की, भगत के दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, कि इसको ज़रूर कोई सिख रिश्तेदार होगा। मेरी वाइफ के इधर उधर ढूंढा, उन्हें कुछ मिला नहीं। फिर उन्होंने ये एफर्ट की कि मेरे खिलाफ हर हफ्ते एक कंप्लेंट हाई कोर्ट में जाती थी। कभी किसी से दाखिल करवा देते, कभी किसी से दाखिल करवा देते। और मेरा फिर वो कंप्लेंट मेरे को हाई कोर्ट भेजता,
कि जी अपने कमेंट्स दो। तो हर हफ्ते एक कंप्लेंट से मैं बड़ा तंग हो गया। मैंने कहा ये क्या मजाक है, मैं जुडिशियल काम करूं या कंप्लेंट के जवाब ही तैयार करता रहूं। तो मेरे इंस्पेक्टिंग जज थे मिस्टर ए बी सहारिया, मैं उनसे मिलने चला गया छुट्टी के दिन टाइम लेके, और साथ में जेब में रेजिग्नेशन लेटर लेके गया कि मैंने कहा जी ये क्या मजाक है, आपने जो है मुझे नहीं काम करने दे रहा, तो मैं रेजिग्नेशन लेटर लाया हूँ, ये ले लो। ये हर हफ्ते की एक कंप्लेंट और उसका जवाब आप मेरे को फॉरवर्ड कर देते हो, ये भी नहीं देखते कंप्लेंट में क्या लिखा है। फिर वो हर ऑर्डर के खिलाफ, एचकेएल भगत की ट्रायल भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी थी, लेकिन हर ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाना। एचकेएल भगत के खुद भी काफी वो वकालत में थे, तो उनके कई रिश्तेदार भी वकील थे। तो वो जो है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन दिनों जसपाल सिंह जी क्रिमिनल बेंच में थे। तो वो एक अपील में उन्होंने एक एलिगेशन लगा दिए मेरे पर्सनली मेरे खिलाफ। तो जसपाल जी सिंह जी के पास गई, उन्होंने कहा भैया ये पहले तो आप एफिडेविट फाइल करके ये एलिगेशन वापस लो, और मैं तब तक ये अपील सुनूंगा ही नहीं। हाँ, तो वो जो है, तो इससे ये वो हो गया। लेकिन एक जब मेरा टेन्योर जो है 3 साल का जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। नॉर्मली ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स जो हैं सभी जजों की इकट्ठी होती है, जिनके 3, सवा 3, 3.5, लेकिन इसमें ये हुआ कि जिस दिन मेरा 3 साल का टेन्योर पूरा हुआ, सेम डे मेरे पास ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, और मेरे अकेले के ट्रांसफ़र ऑर्डर था। ये 3 साल जब मैं कलकत्ता में 84 रॉयड की केस कर रहा था, मेरी एसीआर नहीं लिखी, एनुअल कॉन्फिडेंस वो जो रिपोर्ट होती है वो नहीं लिखी। मैं वैसे परवाह नहीं करता था उन दिनों। मेरा ये था कि भाई मैं जिस काम के लिए भगवान ने मुझे भेजा है मैं वो काम कर रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। मेरी ट्रांसफ़र के 1 साल बाद मेरे पास एसीआर पिछले 3 साल की आई, और उसमें मेरे को डाउनग्रेड कर दिया था एक साथ ही। अच्छा, मेरा ये था कि मैंने कलकत्ता में काफ़ी काम किया, न सिर्फ 84 रॉयड में, टाडा पोटा के जितने केस थे सब निपटा दिए थे। 84 रॉयड का सिर्फ एचकेएल भगत का केस छूट गया था, क्योंकि वो हर दिन हाई कोर्ट चला जाता था। तो वो जज के लिए बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। अब उसने बेल एप्लीकेशन पहले दी, फिर दूसरी बेल एप्लीकेशन बीमारी के उस पर दी, उसने कुछ बीमारी के सर्टिफिकेट लगा दिए। तो वो लेके, मेरे एक दोस्त डॉक्टर थे, मैं उनके पास चला गया कि भैया मेरे को समझाओ ये क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या दवाइयां लिखी हैं, इनका क्या वो होता है। तो वो सारे नोट्स बना के ले आया। अगले दिन जब बहस थी तो मैंने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, क्योंकि मैं सब समझ आया था कि ये बीमारी ऐसी नहीं है जो उसको जेल के डॉक्टर ट्रीट ना कर सकें। तो फिर वो अंदर रहे, उनकी बेल ड्यूरिंग ट्रायल तो नहीं हुई, बाद में हुई, मेरे जाने के बाद हुई शायद, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन बेल हो गई थी उनकी। कुछ तो
he had become a vegetable after some time. तो वो जो है उनकी ट्रायल भी शायद कंप्लीट नहीं हुई इसी कारण से। तो वो जब मेरे पास ये 3 साल की इकट्ठी आई तो आई वॉज बिट परटर्ब्ड। मैंने कहा भाई ये क्या है। तो मैंने हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, जब तक जज हूँ मैं तब तक ये पाप जो मैं कर रहा हूँ आपकी नज़रों में वो मैं करता रहूँगा। आपको जो करना है आप करो, मैं आपके पास ये कहने भी नहीं आऊँगा कि आपने मेरी रिपोर्ट क्यों डाउनग्रेड कर दी, क्योंकि आपने इसमें कोई कारण तो लिखा नहीं कि क्यों डाउनग्रेड कर रहे हो। वो मेरी 11 पेज की चिट्ठी थी जिसमें मैंने हाई कोर्ट को आईना दिखाया था कि भाई आप लोग देते किस ग्राउंड पे हो कि किसका माई बाप हाई कोर्ट में बैठा है, कौन जाके चमचागिरी करता है, कौन यहाँ वहाँ खड़ा होकर के सिफारिश करता है, इस ग्राउंड पे देते हो। काम के बेस पे तो देते नहीं। अगर काम के बेस पे दी होती तो मेरी सारी जो मंथली रिपोर्ट्स हैं वो जितना काम आप मांगते हो उससे ज़्यादा दे रखा है। खैर मैं आ गया तो सीनियरिटी में काफ़ी ऊपर था, तो मुझे पता चला कि HR भारद्वाज उन दिनों लॉ मिनिस्टर थे कि उन्होंने कसम खाई है कि इसको हाईकोर्ट जज नहीं बनने देना। मैंने कहा मत बनने दो भाई, तुम कौन हो कौन। मैं न तुम्हारी कृपा से डिस्ट्रिक्ट जज बना, न तुम्हारी कृपा से हाईकोर्ट जज बना। मेरे दोस्तों ने, जब मैं डिस्ट्रिक्ट जज बना तो बहुतों ने कहा कि मिल लो मिल लो मिल लो। मैंने कहा मुझे नहीं मिलना। फिर हमारे हाई कोर्ट के अंदर भी जो जजेस हैं उनके ऊपर जितना कम कहूँ उतना बढ़िया। मेरे वो जब लेटर गया तो आई वॉज ब्रांडेड कि ही इज इनकोरिजिबल, इसको सही नहीं कर सकते। और एक सर्कुलर जारी कर दिया कि आज के बाद हम डाउन ग्रेडिंग के ऊपर किसी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। ये सर्कुलर उन्हें बाद में विड्रॉ करना पड़ा। अच्छा, मैंने भी वो रिप्रेजेंटेशन दी नहीं। जब डिस्ट्रिक्ट बनने का नंबर आया तब तक मेरे पास जो है, असल में 2001 में पार्लियामेंट टैग केस हो गया तो इनको जज भी नहीं मिलते थे कि जो स्ट्रांगली केसेस कर सके। तो फिर मुझे पोटा जज बना दिया। तो 2004-05 के अंदर जब मेरा डिस्ट्रिक्ट बनने का नंबर आया तो चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने बुला के कहा भैया तुम रिप्रेजेंटेशन दो, हम तुम्हारा अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि तुम्हें डिस्ट्रिक्ट बना सके। पोटा जो पार्लियामेंट टैग केस में जब कन्विक्शंस की मैंने, और भी बहुत टेररिस्ट थे पोटा के अंदर जो है हुए थे, तो मेरे साथ एक और बढ़िया इन्होंने मजाक किया। पहले A से B+ किया था, फिर B+ से B कर दिया और रिकमेंड किया था जो मेरे इंस्पेक्टिंग जज है उन्होंने C होता है इनकम्पिटेंट और करप्ट। तो वो जो है मैंने कुछ नहीं, मैंने रिप्रेजेंटेशन दी नहीं। मैंने कहा मैंने जब कहा है तुम्हें कि मैं नहीं दूंगा तो मैं नहीं दूंगा।
फिर जब डिसीजन बनने का आया नंबर, तब मेरे को बुला के कहा कि भैया एक एप्लीकेशन दे दो, हम आपका ग्रेड बढ़ा दें ताकि डिसीजन बना सकें। फिर मैंने वो उन्हें एप्लीकेशन दी, उन्होंने उस ग्रेड को अपग्रेड करके फिर मुझे डिसीजन बनाया। तो एक जो छोटी सी चीज़ मैं देखता हूँ, जैसे नारायण जी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा भी हो, अदालती कानून कैसे भी हो, ये निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर। हमारे अंदर वो जनरेशन खत्म हो रही है जो स्टैंड ले सकती है, जो सेक्रीफाइस करने, जो ऑनेस्टी के लिए कह सकती है कि भैया करना है जो कर लो, मेरा तो यही है। जजों की जनरेशन भी नहीं है और वकीलों की भी नहीं है। यहाँ फुल्का साहब बैठे हैं, मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आज वकीलों में भी वो जनरेशन नहीं है जो स्टैंड लेके प्रोटेस्ट करे। वकीलों को रोज अदालतों में पेश होकर के रिलीफ मांगना होता है। पहली बात तो ये मांगने का जो प्रथा है ये भी गलत है। वो इसको एज ए राइट नहीं मानते कि ये हमारा राइट है। कोई वकील की ये हिम्मत नहीं होती जैसे आपको ये कहने की कि भैया आपने आज केस लगाया है, मैं सुबह से बैठा हूँ, मैं डेट लेके नहीं जाऊँगा, आप बैठो लेट, आप सुनो, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे आज बुलाओ। अगर वो अपना सिस्टम नहीं सुधार सकते केस लगाने का, वो करने का, तो आम आदमी क्यों सफर करे। ये हिम्मत किसी भी वकील में नहीं है कि वो जज को ये कहे कि नहीं जज साहब मेरा केस तो आपको सुनना ही होगा, आपने 25 केस लगाए क्यों अगर आप सुन नहीं सकते थे। तो वो ये, और हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी क्या है, एक तो जिनको हम रिक्रूट करते हैं वो एवरेज से नीचे होते हैं, फिर उनको हम ट्रेनिंग नहीं देते, और फिर हम उनको ये कहते हैं कि भैया देखो बाहर से बना के रखना, बाहर को नाराज मत करना। बाहर का मतलब वकीलों को नाराज मत करना, और वकीलों का क्या है कि जज को मत नाराज करो। अब ये क्या है, वकील और जज भाई भाई, और इस भाईचारे के अंदर कौन पिस रहा है, आम आदमी, पैसे वाला नहीं पिस रहा। देखिए पैसे वाला ऐसा वकील करके ले जाता है जो जज के ऊपर हावी होता है, और आम आदमी के पास वो वकील होता है जो या तो नया होता है या जिसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि जज के ऊपर। तो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। अब इस सड़ी हुई न्याय व्यवस्था से, मैं तो इसे न्याय व्यवस्था भी नहीं कहता, अदालती व्यवस्था कहता हूं, क्योंकि न्याय तो यहां है नहीं। न्याय व्यवस्था में न्याय की आशा करना भी गलत है। आज लोग अदालत में जाते हुए डरते हैं। किसी का 2-3 लाख का केस हो तो वो अदालत नहीं जाता, क्योंकि उससे ज्यादा उसका खर्चा और टाइम हो जाता है। अदालत जाना एक मजबूरी है, जिसके बिना आप चारा नहीं, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो अदालती व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। न्यायाधीशों को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है।
वकीलों को भी जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। अगर वकील जिम्मेदार होते तो ये केस में वहीं छोड़ना चाह देते, इकट्ठे होकर प्रदर्शन ही कर देते कि ये क्या है, आपने ऐसे जज को क्यों बनाया जिसने कभी लॉ ही नहीं किया, क्रिमिनल लॉ ही नहीं किया, या वो केसों में देर हो रही है, जैसा आप काम ही नहीं कर रहे, औरों को बनाओ, या एक ही जज को सारे केस क्यों दे रखे हैं? हर अदालत में दो दो तीन तीन जजों को दो ताकि केस निपटे। अगर इंदिरा गांधी का केस की ट्रायल कंप्लीट होकर के 94 में फांसी हो सकती है उनको, तो बाकियों में ये भी तो उसी समय के क्राइम है। तीस साल बाद, 35 साल बाद आप किसी की ट्रायल शुरू कर रहे हो, क्या सोचते हो कि 35 साल पहले जो हुआ था गवाह को वो याद होगा? वैज्ञानिक उसके अनुसार एक गवाह की मेमोरी 3 महीने बाद फेड होनी शुरू हो जाती है। 3 महीने तक उसे लगभग सब याद रहता है, उसके बाद धीरे धीरे फेड हो जाती है। और वकील के ऊपर तो कोई लगाम है नहीं। अच्छा, आज से वो उस तारीख को तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी का मर्डर था, उस दिन जो है उससे दिवाली कितने दिन पहले थी? होली उस साल कब पड़ी थी? मैंने तो देखा है बहस वकीलों को वो करते, तो मैं तो उसी समय वकील साहब को कहता था भैया ऐसा है तो इससे बाद में पूछना, पहले ये बताओ पिछले साल होली कब थे, तुम बताओ। तो कोई लगाम नहीं है लगाने के लिए। देखिए ये काम जज का होता है, जज को सारे अधिकार हैं कानून में, लेकिन जज जो है आज की तारीख में जज कम है, बाबू ज्यादा। वो जैसे बाबू फाइल खिसका देता है ऐसे ही जज भी फाइल खिसकाते हैं। तो इसके लिए दोषी कौन है? हम ही लोग दोषी हैं। जो जिस जनरेशन आप कहते हो ना कि ये जनरेशन जो है भूल नहीं पाएगी, भूलना नहीं चाहिए, इतिहास याद रखना चाहिए, इस जनरेशन को ये याद रखना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी भी है कि न्याय व्यवस्था को ढंग से चलाना। अगर कोई जज बन जाता है तो बाबू ना बने। और मैंने तो शुरू से ही बाबू बनने से मना कर दिया था। आपके आसपास जो माहौल है वो ऐसा ही है कि आपको बाबू बना देगा। शुरू में हुआ तो मिस्टर इंडिया आपकी यूनिट ज़्यादा जा रही है, जजेस हमें कहेंगे हाई कोर्ट कि आपकी यूनिट ज़्यादा क्यों जा रही है, आप इतने पे रुक जाए करो। 80 यूनिट देने होते हैं एक सेशन जज को, आप देख लो 81 यूनिट कम ही मिलते हैं। ज़बरदस्ती को हो जैसे आधे यूनिट आ गई तो 81 यूनिट कम मिलते हैं। 80 के बाद कलम बंद, तो बाबू ही रहेगा कि मैंने तो काम कर लिया आज का, मेरी तनख्वाह पूरी हो गई। तो ये माहौल पूरी जुडिशरी के अंदर है और सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में। और जो काम कर दे जल्दी कर दे उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा देते। अभी मैं पढ़ रहा था राजस्थान या कहीं एक केस किसी ने डे टू डे ट्रायल करके हफ्ते 10 दिन में निपटा दिया, उसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। उस बेचारे को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा वो अपनी सस्पेंशन। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का, तो तो ये जो है, सॉरी टाइम लिमिट भी मेरे को रिस्पेक्ट करनी है,
तो ये जो व्यवस्था है ये हमारी बनाई हुई है और इसको हम ही बदल सकते हैं। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि जज और वकील इसको कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। 75 साल तो हो गए, मजे कर रहे हैं। एक एक वकील की फीस आज 21-21 लाख तक पहुंच गई है, वो भी एक पेशी की, और एक दिन में वो 2 या 3 पेशी आराम से कर देता है। और नीचे, सबसे नीचे लेवल की बात कर रहा हूं, 11,000 के वकील का पेशी आम बात है। 11,000 पर डे के हिसाब से कौन अफोर्ड कर सकता है? किसी गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह ही 20,000 रुपये हो, वो 11,000 रुपये पर डे वकील कैसे अफोर्ड करेगा? तो किस चीज पर हमने लगाम लगाई हुई है? हम चिंता करते हैं वकील के चैम्बर मिले कि नहीं मिले, उसके लिए लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, उसकी कैंटीन कोर्ट में अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये चिंता किसने की कि जो लिटिगेंट है उसको क्या मिल रहा है अदालत में आके? और फुल्का जी का और बाकी लोग वकीलों का तो अदालतों में बहुत भरोसा होगा, लेकिन मेरा नहीं है। तो इस न्याय व्यवस्था के अंदर अगर आपको अदालती व्यवस्था में न्याय लेने के लिए असल में न्याय मिलता नहीं है, केस का फैसला कराने के लिए भी एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं और जूते फट जाते हैं। जेब कोटते आपका मकान बिक जाता है, वो तो अलग चीज है। तो इसको बदलने के लिए आंदोलन की जरूरत है। ले रहे हैं लोग। देखिए, आपको मैं बताऊं, एक ईमानदार पुलिस अफसर, मान लो भाई, ईमानदार बेईमान हर जगह है, ये मत सोचिए कि पुलिस वाले सारे बेईमान होते हैं। ना सारे जज बेईमान, ना सारे पुलिस वाले बेईमान, ना सारी जनता बेईमान। एक ईमानदार पुलिस अफसर अगर एक अपराधी को पकड़ लेता है और 20 साल बाद वो अपराधी 20 साल केस को लटका के छूट जाता है, आप तो चलिए अपराधी छोड़िए, मैं आपको केस दिखा सकता हूं, रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए जो लोग पकड़े जाते हैं। एक मुझे रिपोर्टेड केस है, डीजीपी रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया, केस चला, प्रूव हो गया, ट्रायल कोर्ट में प्रूव हुआ, हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में भी अपहोल्ड हो गया ट्रायल का, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे ये बड़ा बेचारा तंग हो गया है, इतने साल इसने केस भुगत लिया, इतनी सजा बहुत है, इतनी सजा बहुत है। तो अब तो हमारे कोर्ट जो है ना, वो जैसे आप बड़े बड़े उसमें जाओ, कुछ हमारे यहाँ मंदिर ऐसे हैं कि कितने की पूजा करानी है, 21,000 की, 11,000 की, 51,000 की, 1 लाख की। तो अगर आप 1 लाख पहले पूजा हो तो सीधा भगवान के सामने ले जा करके, मूर्ति सामने वहीं ले जाएंगे। तो हमारे मंदिर भी वैसे ही है, ये आजाद जिनको न्याय का मंदिर आप कहते हो, आप कर लो 21 लाख का वकील कर लो, वो आपको अगले दिन केस लगवाएगा, आपका अगले दिन केस लगवाएगा, सुनवाई करवाएगा और आपका वो करेगा। तो इसलिए मेरा मतलब इस पूरी व्यवस्था जो है सड़ चुकी है और हम ही जिम्मेदार हैं, उनसे ज़्यादा हम जिम्मेदार हैं।
कि हम बोलते ही नहीं, अरे बड़ा अच्छे जज हैं, देखो क्या फैसला दे दिया, जो पूरा इतिहास है वो भूल जाते। सब भूल जाते हैं कि भाई तुम सिर्फ फैसले देने के लिए नहीं आए हो, इस व्यवस्था के सुधार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। पार्लियामेंट में मैं आपको बता रहा हूं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जुडिशरी को छू ले। वो छुआ था ना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, क्या हुआ? वो फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा क्यों नहीं पार्लियामेंट ने? पलट सकती थी। अगर शाहबानो का केस पलट सकती थी तो ये भी पलट सकती थी कि सॉरी आपके पास पावर नहीं है अपॉइंटमेंट की, हमारे पास है। नहीं पलटा। स्टैंड लेने वाला चाहिए ना बंदा, नहीं पलटा। तो ये जनता को ही एक दिन उठ के आवाज उठानी होगी कि बहुत हो गया, ये अदालतें बंद कर दो, इससे अच्छा है कि 30-30 साल तुम हमें वो। धन्यवाद आप सब लोगों का। जज साहब ने 3 केसेस में फांसी की सजा सुनाई थी। पांच में फांसी की सजा सुनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर कुछ तो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी, और बाकी जो किशोरी लाल को इन्होंने सुनाई थी, तो किशोरी लाल को 3 में थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये 1998 में उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। चाहे वो किशोरी लाल आज 29 साल से जेल में है, मगर वो फांसी की सज़ा नहीं, उम्र कैद की सज़ा वो भुगत रहा है। बाकी और जो इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, वो कितने केस में दी थी टोटल? मेरा कम 14-15 केसेस में इन्होंने कन्विक्शन की थी। पहली बार 84 के केसेस में जो कन्विक्शन हुई हैं वो जज साहब की थी, जो इन्होंने की थी। Thank you, sir, for sharing all your wonderful experiences. And we would be ever grateful to you for giving us the landmark judgments in 1984 anti-Sikh rights. Now I request Justice Talwant Singh to kindly share his experiences. Sir, please. थैंक यू मैडम। आई थिंक एज ए ट्रेडिशन जूनियर्स पहले बोलते हैं, सीनियर्स का नंबर बाद में आता है। हमने ढिंगरे साहब को पहले सुन लिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। सो ही इज़ माई सीनियर, आई हैव वर्कड अंडर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम इन Patiala House when he was a Pota judge trying the Parliament attack case, and after that he was my district judge, and he brought many revolutionary changes in the functioning of district courts when he was there for about a period of 1 year as a district judge. So we still remember, and when I became a district judge, I tried to carry on that tradition. The 40 years period is a long period. As it was said in the first session also, the next generation is now insisting that we should move forward and we should forget. But we have got organizations like the Sikh Forum and other organizations which have still kept this flame alive, and we are still yearning for justice. I touched these cases for a very short period when I was district judge Northeast. I had Sajjan Kumar's case with me at that. Sajjan Kumar's case with me. Yeah. The day I took charge, and on the very first date, he moved an application for transfer from my court. So he thought that he is a Sikh, he is going to convict. I think this, which is a wrong notion. If
there is evidence against you, naturally you will be convicted. If there is no evidence against you, whether I'm a Sikh, a Hindu, a Muslim or a Christian, I can't simply convict you. So Fulkasa was there in that matter. We had, I think, 2-3 hearings there during the period when he tried to get the matter transferred. He moved High Court. Again, a battery of lawyers used to appear for him. It doesn't affect us, as judges. I had another, you can say, I got another opportunity. Before that, I think, in 2003, I joined judiciary in 2000 as an ADJ, and I was essentially a civil and a corporate lawyer before that. So as Justice Dhingra was mentioning that Balsa was doing revenue matters, I was doing civil and corporate matters before. For 14 years I practiced on those lines. I never entered a criminal court in my 14 years career as a lawyer, initially 86 to 2000. मुझे डर लगता था कि मेरे साथ एक क्लाइंट जाएगा और अभी जज साहब कहेंगे इसको कस्टडी में ले लो, इसके वारंट इशू है, और some mental block was there. But in 2000, when I joined judiciary in 2000, so 2000, 2003 I was on the civil side. In 2003 I was transferred to Patiala House as additional session judge and given a charge of a criminal court. So first 2 months I couldn't understand what was going on in the court, but gradually I picked up. I had the matters of those transistor bomb kand, if I think old people must be remembering those cases, of Kartar Singh Narang's matter. The only common factor amongst all the matters was Mr. Kartar Singh Narang, who happened to be a lawyer. So this was of 1985 matters. I went there in 2003. So 1985, yeah, 15 years plus 3, 18 years. So all these transistor bomb explosions took place in North India, in different states, Rajasthan, UP, Haryana, Delhi, maybe 1 or 2 more, Madhya Pradesh also, I think, 2-3 more states. These FIRs were registered there, the accused were arrested there, and they remained in jail for much longer period, and thereafter they were granted bails by Supreme Court and different high courts, and by one order, the Supreme Court had transferred all the cases to the court which I inherited in 2003. So we had more than 60 FIRs, but all those 60 cases were clubbed together. And again, the same thing as Justice Dhingra has said was happening. All the accused, they were supposed to appear on one day. When I took the charge, the files were lying in trunks. Nobody had opened those trunks for years. So I just asked my court master, कि court कैसे चलती है भाई? कहता सर, जज साहब ने ना एक अटेंडेंस स्लिप बना रखी थी, उस पर अटेंडेंस मार्क करते थे और कोई ना कोई उसमें से एब्सेंट हो जाता था हर साल. आई थिंक दैट वाज maybe a tactic also being adopted. I don't know. Either side. We are not going into that. And we had a council appointed by the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee who used to take care from the accused side. All these accused were coming from different parts of the country, and they were, I think, meeting each other, and after some time, 4 accused are absent or 3 accused are absent. Even, I think, the charge stage has not come in a period of 18 years. Charge भी नहीं लगा था, copies भी पूरी नहीं हुई थी, attendance भी पूरी नहीं हुई थी. So again I did the same thing as हम तो Justice Dhingra के चेले हैं. I called the concerned police officials and we got all those 50 or 60 cases separated. In fact, I first advised, I asked the counsel who was representing the accused, I said, 18 years have passed. You may go to Honorable High Court and say that, these people have suffered for a long time and these FIRs should be quashed. So Butalia Sahab used to appear in all those matters. So Butalia Sahab said, कि सर वो हाई कोर्ट ने क्वैश तो नहीं करनी, पर मेरे गले में डे टू डे ट्रायल बांध देंगे, वो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मुझे और केसेस भी कर रहे हैं. सो आई एम हैप्पी, आपने जो करना है आप करो, मैं हाई कोर्ट नहीं जा रहा. So I separated all those 60 cases, 50 or 60 cases, whatever the number was. Later on, my court was abolished. The trial began, and later on, my court was abolished. And all these 60 cases were distributed among other 5-6 courts in Patiala House. And those trials reached their conclusion.
because that was the way. Otherwise, for 13, 15, 18 years, no judge touched those cases. So that is the attitude that people have in judiciary. वो पासिंग द बक जैसे बोलते हैं कि फाइल को आगे खिसका दो, मेरे को साल 2 साल 3 साल यहाँ रहना, उसके बाद अगला वाला जज देख लेगा, क्यों इन केसेस को ट्राई करना. Again, another, we remembered Dr. Muralidhar here. He's still around. He's practicing with us in Supreme Court as a senior advocate, one of the busiest senior advocate we have in Supreme Court. So Dr. Muralidhar and me, we were sitting as a DB. One day, the Chief Justice was not there, or his bench partner was not there. So these Northeast riots cases were being heard by us. So on that day, वो सडनली मेरे मुंह से निकल गया, ये डॉक्टर साहब के मुंह से निकल गया, वी वॉन्ट अलाउ द 1984 टू हैपन अगेन. North East riots were going on at that time. We passed certain orders. We saw there were many victims or many people who were holed up in a house. They were not, and some of them were injured also. No medical treatment was being provided and all. We ordered for ambulance to go in, bring those out. I think for 2 days or so, this case was with us. And the day we said, we won't allow 1984 to happen again. शाम को 10 बजे डॉक्टर मुरलीधर साहब का फोन आया, तलवंत ट्रांसफर हो गया मेरा. मैंने कहा सर वो तो होना ही था, दिन में हमने जो कोर्ट में किया है उसका असर शाम तक तो होना ही था. So just I was transferred to Punjab and Haryana High Court. I went along with him there, and he had no grudge. A very bold man, and you won't believe. We went by this late train, I think, the 7:15 it leaves Delhi, Chandigarh Shatabdi we call it. It reaches there at around 10:30, or we went by the Shatabdi, one of these trains. There were more than 200, 300 lawyers there at Chandigarh railway station to welcome us. And next day, when we, and before that, in Delhi High Court, the farewell, generally the farewell used to take place, the reference takes place in the Chief Justice courtroom, which can house around 200, 300 lawyers, and the bar gives the farewell in the canteen, which can again house 200, 300 lawyers. But in Dr. Muralidhar's case, the bar gave him a party in the main central hall of High Court, and we got thousands and thousands of lawyers there who bid him farewell from this court. Next day, we stayed in the Punjab Haryana High Court's guest house. Next day, something strange happened. When we were going to High Court for his oath ceremony, there were hoardings on every road saying, Delhi's loss is Punjab's gain. Wow. We can't denounce all the lawyers in one go. They are people who are there, who are really good. Punjab and Haryana High Court welcomed him with open arms. They hugged him like anything. He was there for about a year or so before becoming the Chief Justice. I went again for his oath ceremony as the Chief Justice. But you see, there are bold judges, there are bold lawyers, but of course, one has to be ready to face the consequences. So, Dr. Muralidhar is a model for me. Justice Dhingra is a role model for me, and I try to emulate them as much as I could in my 23 years judicial career. And since last year, I retired last year, and from that day onward, of course, I'm practicing as a senior advocate in Supreme Court. And we try to, I gave an interview to Bar and Bench, there's an online journal we have. So I said 50% of the cases we will do free of cost for poor and downtrodden. And that woe that we took, we are fulfilling that. So in my chamber, half of the cases we do free of cost. And of course, even we tried to, again, I think we have got politics in the way the cases of the victims are being assigned, or the cases of people who are incarcerated, even in Punjab, are being handled. Although I got many queries from the people who are there, but none of them matured. I came to know that in Punjab, I think Navkaranji can vouch for it, there are few selected lawyers who are being engaged by the SGPC to, espouse the cause of those people who have been unnecessarily incarcerated in jails.
And similar thing is happening in the cases which are being followed up by the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee. We have got Ahuja Saab, who knows better than me, our President Saab. I think, there are many lawyers like me who want to give their voluntary service for the cause of justice, for the cause of seeing that the innocents are not harassed or incarcerated, but we are not given any opportunity by these committees for the reasons best known. I'm not assigning any reasons to them, but they know the reasons best than us. Thank you for giving me a chance. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, sir, for sharing such wonderful experiences which you had as a judge. And now I request Navkiran ji, who is come all the way from Chandigarh to be a part of this discussion. He would share his experiences as a human rights activist and as an advocate, what all difficulties he was facing in dealing with such cases. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ 1986 'ਚ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੇ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ। ਬਟਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਟਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਿਕਟਮ ਫॉर ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਾਰਨੇਜ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ 2007 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਡੋ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਨਾ ਜੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਉਹ ਤਾਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਹੀਆਤ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁਚਰਸ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 2002 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 1991 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 2002 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ NIA ਬਣਾਤੀ, CBI ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਫਸੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਉਕਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ 1984। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਪਛਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਦਲਿਤ ਹਰ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੰਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, YouTube ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 84 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਕਟਮਸ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਸਿੱਖੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫੇਸ ਇਟ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Yes, you want to ask some question, please? Please. Right, thank you, Kamna ji. I think you did a wonderful job. और जज साहब ने जो दस्या हैगा, इट्स आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। एक चीज़ मैं कहना चाहना हैगा कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे इस वेले काफ़ी काम चल रहा है। तुसीं सारे ने सुनिया हैगा कोर्ट्स ऑफ 84 विद रेप केसेस that have been brought out by Mr. पुराना एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले हैगे सी, he has brought out that, जी, right. And then the Sikh Research Institute from California, they are doing another good job of doing the documentation of the 84. So a lot of job is being done quietly. The third thing which I have noticed is there is a gradual phase of change of mindset from carnage to genocide. Now some of the reporters have started taking that line. It's a very slow process, but I'm sure with that some more awakening will come, and the present narrative which has been going on in the press and the media, it might undergo change. Well, thank you very much. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਚ ਖਾਣ ਲਈ, ਐਂਡ just a second. One is that we finish this session and it will finish up by 2:30. That is one, and then go for lunch. The second is
that we break and then come back. Now, I ask the audience. Okay, we continue. Gentlemen, there is small little more job which will do it. We have a talk about basically 92 children who are to be honored, given a scholarship. Every year you give. This time we are giving about 3.60 lakhs. We only 10 boys will be here, boys and girls, who are to be given this scholarship. That part also we'll do side by side, but that will not take more than 2 minutes. So just for your information, this is what we give to the victim's family, grandchildren now, and some victim section of society, financially weaker. We are honoring them for higher education, and some of the boys and children from the victim family even have gone graduate and postgraduate also. So we will go with the third section right now. I would, just for a token of our respect, one other question to the panelists. Who are the... I think when we have lunch time, we can spend that time. That will be better. I think you really... Ashoka University. She has previously taught at Georgetown University, Washington, D.C., University of Delhi, educated at St. Stephen College, Cambridge University, and John Henry University. She is the recipient of the research grants from the British Academy, Andrews Mellon Foundation, and Charles Wallace India Trust. Her books include Waiting for Swaraj, Inner Lives of the Indian Revolutionaries, My Son Inheritance, A Sacred History of the Launching and Blood Justice of India, Blood in Injustice in India. And she has got another important book which has come out is this Encounter and Inland History. This is some of the, very, very brief introduction. Secondly, take care of, next is Mrs. Farah Naqvi. She is a human rights activist. Farah Naqvi is an Indian feminist, writer, educator, consultant, and activist known for significant contribution to justice, diversity, unity, equality, and inclusion. She's been working for the human rights, and she's been given the award by the Human Rights for the Delhi Minority Commission for her services. She's also worked in the NSC, which was formed at the time of Manmohan Singh, then Prime Minister. We go to the next panelist of the day. We have Surinder Jodhka. Surinder Singh Jodhka is a human rights activist and caste spectre in India. Professor of School of Sciences, JNU, Honors and Award. He is the recipient of the ICCR Amartya Sen Award for Distinguished Social Services and visiting professor, University of Lund, Sweden, and associate professor, University of Berg, University of Wisconsin. He is a writer of a number of books, and his recent book was on the village, was very well received. He has recently been selected for distinguished contributors to the development of studies by Madras Foundation, Malcolm and Elizabeth. Coming to our moderator for this one is Mr. Colin Gonsalves. He is a senior advocate. Well, he started as he's IIT graduate, started with a junior worker, junior leader, and eventually shifted to the legal system. And today what you hear, what you see him, he is with us today. He has written, edited, and co-edited a number of books, and books on the range of human rights,
law issues. And he is the founder of the Human Rights Law Network in India. Mr. Collins was awarded Human Rights Lively Award in 2017. I won't say much on that. And over to Mr. Collins now. All the panelists will have a 10 minutes time to make up some of the losses, and let's see how much justice they can do to the job. And she's in a hurry to go. I think we can, Collins, you can request for her to take over. Good afternoon, everybody. This is the third and last session. Farah Naqvi has requested that she speak first and then go, and all the panelists are agreed. So we'll go in this sequence: Farah Naqvi, Professor Parna, and then Professor Surinder. So we start right away because we are running behind time. Farah, please. Thank you so much, Colin Gonsalves, Pratap Singh Ji, the Sikh Forum, and everyone who's stayed through this afternoon, despite, I'm sure, the hunger pangs in all your stomachs, because this is a very, very important day for me. And I am privileged and honored that the Sikh Forum once again has invited me to be part of this moment with you. I was part of this moment maybe 5 or 6 years ago. I think Pratap Singh Ji had invited me. This was at the Constitution Club, if I remember correctly, because it matters to me. It matters to my sense of justice. It matters to my place in this country, that everybody has a place in this country. This is not an occasion where one gives speeches, and we have a limitation of time, so let me just try and not get emotional, because I always get emotional when I talk about something that happened in my city. I was born here. I was brought up here. And this is a memory that will never be, there was a young person over there, I think it was you, who asked about how we let the young generation know about what happened. People want to forget. Last night I was at a dinner and they said, Sunday ko, I said, no, I have to go to this event. And they said, ये क्या event पे जा रही हो यार? तुम activist लोग हमें भूलने नहीं दोगे. It made me think, what do you mean हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे? You see, ये भूलने और भुलाने की भैया आगे बढ़ो, अब जिंदगी इतनी बची है, तुम लोग इसी दलदल में जीते रहोगे. Looking back, look forward, New India, Modi India, Vande Bharat, Bullet Train, ये भाषा बोलो. तुम लोग ये क्या इंसाफ के दलदल में हमको फंसाते हो? मैंने कहा नहीं. You cannot forget. Because our future is built on the bedrock of our past. You cannot have a wounded and a bleeding past unresolved to bequeath to your children. They will never live a peaceful future in their hearts, in their souls. Every time 1984 is mentioned, they will cringe with discomfort. They will know my family buried something. I know it should have been discussed openly. This is what psychological trauma is. We cannot afford, and we will not forget this, because we do need to build a future based on the resolution of a past. That is one. The other is, you may, or people more prosperous in this room may even have the luxury of forgetting. Please remember, the widows of Tilak Vihar do not have that luxury. It is not a choice for them. It is not a choice for those boys. For the drug addiction in those rehabilitation colonies, they don't have a choice. They are paying the price, and they will continue to pay the price, and generations will pay the price. This has been one of my big issues whenever I talk about mass violence in this country, is that while we continue to fight for justice for those who died, we often forget that we need to be just as loud and just as strong and just as coherent when we seek justice for the living dead. Because that is what mass violence leaves in its wake. It leaves generations
wounded, it leaves destroyed futures, it leaves destroyed families, and they live still in Delhi, go and see their lives. So do not ever tell me that we can afford to forget. We can't. So that is just one part of what I wanted to say. I also, every time I say, well, I'm grateful for the Sikh Forum ought to know that there are many non-Sikhs in this country, in this city, who will not allow this to be forgotten. It is not the responsibility of the Sikh community alone. It never was, and it never should be. Having said that, let me move on to really what this panel was supposed to be about. I'm a little, I'm kind of zipping through, and Colin, I would like to ask you to ask me to keep quiet if I exceed 10 minutes. Yeah, please. Yeah, that's, all right. Let's talk, so I was supposed to talk about democracy. We are, look, democracy is honestly the Indian version of democracy. We are on a ventilator. What is it? We are a democracy on a ventilator, and we cannot seek a just future unless we repair that democracy. Effective civic participation, a strong civil society, no. Big crackdown. An independent judiciary, no. We have a judiciary that cannot hold the executive to account. The rule of law, absolutely not. What do we have that make up an independent media? Yeah, we've got one independent media in this room at the moment. We've got, let's not be hopeless, we've got a whole space of digital media opening up. But what is called legacy media, and I hate to use that term because it confers on this Godi media too much of the value and the sheen of tradition, which they do not deserve. It's not legacy media, but yes, completely sold out. So what elements of a democracy are we saying that we want to hold on to, and on the basis of which can we move forward to seek this justice? I think Justice Dhingra was quite right when he said it's up to us. It is going to be up to us. It's up to Prasad Singh ji, it's up to Pulka Saab, it's up to me. It's up to Tarlochan Singh ji, it's up to everybody in this room, it's up to lawyers like Colin who continue to fight these battles as well. It's up to Surinder who continues to write, and Siddharth who continues to run an absolutely amazing, independent, fiercely independent media outlet in this atmosphere of a democracy on a ventilator. So I think we can rescue it. I think it will take time. It will take all of us working together. But this is not a battle that we are going to lose. We are not going to lose it. Look at look, on a Sunday, you had a house. Yeah, the crowd has thinned because everyone's hungry, yes. But on a Sunday, everyone was here. People care. People care that democracy, and to me, the most fundamental as an activist, of course, there are many issues. For me, the denial of justice is the most grave issue that, so what I'm trying to say is we not only have a crisis of legitimacy in our democracy, we have a crisis of widespread impunity for mass violence. Let's hold on to that term for a second. Widespread, historic impunity for mass violence in India. That is the hallmark of how mass violence has been dealt with in our country. And people often say, agar ye nahi hota, to wo nahi hota, wo nahi. It's true. It is true. We never stopped. And it's not just India. So of course, we've had 84, we had Nelly massacre in 83, before that we've had Muzaffarnagar, we've said all of this. But the sad truth about all, and by the way, look globally. You want to talk really look what's happening in Gaza today. And before that, look what happened during the Holocaust. Look what happened in Darfur. Look what's happening. Look, mass violence. The one thing about mass violence I really want us to hold on to and never let go of.
Mass violence is not caused by people and by frenzied mobs and by communalism and by दिमाग खनक गया और गुस्सा आ गया और आक्रोश हो गया. In episodes of mass violence globally and in India, the state is the criminal. Learn to say it. The state is the criminal. Our language is so weak. What do we say? State did not help victims of 84. Police stood around. They allowed. Somebody enabled. So we use obfuscatory language. Police didn't do anything. Police didn't do its duty. State didn't act. Acts of omission. I'm saying cut through this garbage. No episode of mass violence in any district of India can continue for more than 24 hours unless the state is the criminal. That is, every IAS officer who served in a district will tell you that basic fact. And that is why we do not have justice. Because ultimately, हम प्यादों को पकड़ते हैं. एक को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, एक पुलिस वाले को देख लिया, उसके चश्मदीद गवाह भी मिल गए, लेकिन हम स्टेट को कटघरे में खड़े करने की नॉट की हमारी इच्छा नहीं है, हमारे कानून नहीं है. कानून देखिए, कानूनों में फुल्का साहब ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी है और आपको नमन सर. You are an example of the kind of battle for justice, enormous respect for you. But he has fought this battle with both hands tied behind his back because the legal framework of India has not supported him. What am I talking about? Look, it's really important for us to understand what we are talking about. What is this legal framework? In mass crimes, like you heard Justice Dhingra talking about omnibus FIRs, 200 murders की एक FIR, summary closure, जी ना इसका कोई सबूत है, ना इसका कोई witness है, complainant भाग गया है, summary closure, फिर witness भाग गए हैं, फिर जी मतलब अनगिनत चीजें आपके कानून में लूपहोल्स हैं, वो आपने ब्यौरा जस्टिस ढींगरा से सुन लिया, करेक्ट. अब इसका हम लोग करें क्या? Actual fact is that if we try and remember what mass violence looks like, feels like, and remember, we have to go back 40 years, and by the way, it brutalizes us to know today is the 3rd of November, 40 years ago, this city was on fire, and that fire did not, and that murdering did not stop till the 7th of November. If then, we are right in the middle of that massacre, that 40-year-old massacre. So yeah, just an aside, we can't forget. But what does it look like? It looks like, yes, murder. It looks like people running. It's people homeless. It's internal displacement of a huge magnitude. In this circumstance, you're expected to follow IPC and CRPC, now the Nyaya Sanhita or whatever, and find your witness. And find that one person. You see, the idea of individual culpability in the IPC is the problem. When there is mass violence, there has to be joint culpability. When there is mass violence, there has to be command responsibility. When there is mass violence, there have to be presumptions made in law. I'll give you an example of what could a presumption look like. Ex-policeman was standing on this choraha. In the neighborhood, 50 people got murdered. But uska conviction हम कैसे करें? क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहा है. अब ये सेफ प्रिजम्पशन है कि नहीं? कोई बंदा दिल्ली पुलिस का बंदूक लिए एक चौराहे पर खड़ा है, पुलिस की वर्दी पहनी है, उसके लेफ्ट राइट आगे पीछे 50 लोग मारे गए. Can we presume
that he is guilty of something? We have to have, you see, this is what criminal liability for mass violence has to look like. It can't look the way our criminal justice currently looks like, where you seek accountability for every individual. If an entire police battalion is out there, और सब इतने निकम्मे लगे कि उनकी आंखों के सामने 100 लोग मारे गए, बट कोई किसी को, तो पूरा बटालियन को कटघरे में खड़ा करो. कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब टॉप ऑर्डर किसने दिया? जिस प्यादे के हाथ में छुरी थी उसको तो आपने पकड़ लिया, जिसने टायर जला जला करके लोगों के गले में लगाए उसको पकड़ लिया. बोला किसने? उसको पकड़ो. कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ में है नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ में है नहीं, तो मारे मारे हम फिरते हैं. एक बंदा, एक चश्मदीद गवाह are legal. So we tried, of course, as the previous speaker mentioned, that we were not able to create even basic legislative frameworks to prosecute for mass violence. We needed to create that, and we still need to create that. The tragedy is, look, this is not about a government or a political party. Honestly, this, what we are confronting is the very nature of the state. The state will never allow itself to be held accountable, which is why 40 years down the line, governments have changed. Governments have changed at the center. Governments have changed in states. Could nobody do anything for justice? Because it is not about governments. It is about the very nature of a state that does not allow itself to be put in the dock, that will never allow a provision that is capable of holding an entire police battalion culpable because under its watch so many people were killed. They will not allow that. They will resist that. So they resisted the communal violence bill. It doesn't matter which government or which political party. And we have to acknowledge that, and we have to say, this is the state we are up against. They will never, ever hold themselves. And to that extent, they are all ek thali ke chatte batte. All of them. Okay. Colin, who is someone I have enormous respect for, has told me to keep quiet now. So I will. But yeah, look, I'm just saying that I take courage. I take courage from many battles for justice that are 40 years and longer. I take courage from the comfort women of Japan who have been fighting for their dignity since World War II. So I would say, let's take courage and know that you and I are together in this battle. That it looks like a long night, but it's not. We have these moments. We have these moments where I come because I get energy. I come because every speaker in the previous session gave me something new to think about and spoke a truth that gives me hope. Because I think in many ways all of us in India today are living fairly, we're living lives of a certain degree of suffocation where people don't like to be critical, where people don't like to criticize this government or that government, and there are consequences, and we teach our children to just be mainstream, na left dekho, na right dekho, politics ki baat mat karo, justice ki baat mat karo. But to me, the crisis of the legitimacy of our democracy will continue until we are able to deal with the crisis of impunity for mass violence in this country, and we will do it together. Thank you very much. So, hello everyone. I know I'm standing between you and your lunch. And it's been a long day for everyone. तो सबसे पहले तो मैं प्रताप सिंह जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ बुलाने के लिए, मेरे बड़े भाई जोधका साहब और मेरी बुआ ग्रोवर साहब वहाँ बैठे हैं. वो अपने आप को मेरे प्यो दी वड्डी भैन जी बताते हैं. तो वो मुझे यहाँ मिल गया, तो it's like I feel I'm within family. Now I feel deeply honored and humbled to be invited for this remembrance event. And I do recognize my own position as coming from a majoritarian community. I'm more like I belong to the oppressive community in that way. So thank you for inviting me. Now I was really a small child at the time of the 1984 genocide, this massacre. And in some ways I'm grateful कि मैं बच्ची थी, क्योंकि कुछ इतना याद और इतना impact आपको रखने की ज़रूरत नहीं थी. And as I say it, I'm realizing also
that some children did not have a childhood that I had. Some people, this event actually denied many children their childhood. So keeping that in mind, तो मैंने ये जो बनाया आज का बोलने का, for that I started reading some materials that the Sikh Forum has put out. आपका जो archive है website पे उसको देखा, कुछ और किताबें वगैरह वो सब देख के बनाना शुरू किया तो it's very hard to keep reading that material because I am accessing आप लोग की generation का जो experience रहा होगा उसको मैं documents से access कर रही हूँ. So little bit जो मैंने उसको बनाया वो आप लोगों के सामने पेश करती हूँ. Historian हूँ मैं, भगत सिंह के ट्रायल पर भी एक किताब लिखी है और वायलेंस के ऊपर, हिंसा के ऊपर काफ़ी साल से काम कर रही हूँ. तो आई एम कमिंग टू दिस फ्रॉम दैट, नॉट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. सो अगर कुछ आपको बात ना जचे तो प्लीज़, मेरा अनुभव नहीं है इसका खुद का. So, as I was reading about the Sikh massacre of 1984, what I was reminded of continuously as a historian was the Jallianwala Bagh Kand. अब शायद इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी सोच रहे हो या other people may have said it, but it has an uncanny resemblance to the Jallianwala Bagh event. And also, there is something that ties up the history of the Sikh massacre to the Jallianwala Bagh massacre. Yeah, so very quickly I'll just tell you about that. So in both the events, the killing involved, the people who were killed were innocent men. और जिनका राष्ट्रीय उस समय की जो पॉलिटिक्स थी उससे कोई लेना देना नहीं था. बैसाखी के दिन लोग जुटे हुए थे, उनका गांधी से कोई लेना देना नहीं था और बाकी चीज़ों से भी, वो तो अपने मेले के लिए आए थे, अपने मज़े के लिए आए थे. Similarly, many people amongst who were being killed or who family said, हमारा इससे क्या लेना देना, हमें क्यों, हम तो safe हैं. That was the initial feeling, and then the massacre started. So it was not only people who were innocent, the victims were not only innocent people, but also not connected to the larger politics, national politics that was unfolding at that time. Now, there is one thing that connects the two histories. दोनों history के बीच में एक connection है, और वो है the figure of Indira Gandhi. Now, the interesting thing was that she is the one, as the president, as a chairman of the Jallianwala Bagh National Memorial Trust, in 1969 celebrated the 50th anniversary of Jallianwala Bagh. Yeah, and she is the one who gave out Tamra Patra, these copper plates, to the survivors and the families of Jallianwala Bagh. तो ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि उस मैसेकर को किसी ने स्टेट के लेवल पे रिकग्नाइज किया था. आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके बारे में माफ़ी भी नहीं, दे हैवंट इवन अपोलोजाइज फॉर इट. तो एंड ये जो ताम्रपत्र हैं लोगों ने अभी तक अपने पास रखे हुए हैं क्योंकि उनके लिए दिस वाज सच अ यूनिक स्पेशल इवेंट ऑफ द स्टेट अपोलोजाइजिंग टू देम और रिकग्नाइजिंग देयर पेन एंड ट्रॉमा. नाउ दिस इज द वेरी वुमन who undertakes the Operation Blue Star. So see the irony in this. And it was her killing that sparks off, as we know, the 1984 massacre. So dono merely as a historian are connected with each other. But however, today I'm going to very quickly reflect on two other similarities between the Jallianwala Bagh incident and the 1984 massacre. तो पहला है कि दोनों ही Indian political history में they are an important turning point. दोनों के साथ एक भारतीय इतिहास अलग रुख लेता है, एक मोड़ लेता है. वो क्या है? So all of you know the story of Jallianwala Bagh, so I'll say it in one line. Now, historian B.N. Datta in a seminal work on Jallianwala Bagh, what he says, उसकी significance ये थी, it marked a clear breach between the state and the people. Up until then, Punjab was generally loyal to the British Empire, and the soldiers from Punjab were crucial in British victory in the World War I. But Jallianwala Bagh ke baad, there is no turning back, and Punjab becomes the nemesis of the empire. If it was not for the Jallianwala Bagh, Gandhi wouldn't have launched the non-cooperation movement, we wouldn't have had Bhagat Singh, and there wouldn't be Udham Singh. तो वो एक फाउंड बन गया, वो एक जरिया बन गया पूरा एक, उसके बाद there was no looking back. The empire began to count its days after that. So that way it was a seminal event. And people who lived in the vicinity of Jallianwala Bagh described Amritsar as शहर दा सब तो वड्डा हादसा थे. It was and this can be said for Delhi in 1984. इस शहर का सबसे बड़ा हादसा था वो. After partition, Delhi had not experienced that kind of upheaval. So we know that rioting took place across India and there were killings, like about 4,000 people in Delhi and many more across India. That happened, but Delhi was the epicenter. उसके बाद turning back नहीं था. Yeah?
Now, I'm going to connect this to the 1984, what happens. Now, it was very much orchestrated and planned in the way, so many speakers since morning have said that, in the way Jallianwala Bagh was. वो भी orchestrated था, planned था, spontaneous नहीं था. And then how does it become a turning point? उसके बारे में सुबह से एक दो speakers बोल चुके हैं, but I'm going to add something to that. Yeah? Now, what has been said so far is कि वो turning point था क्योंकि state actors now could perpetrate violence with impunity. Right? इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगी मैं. Now, it was a turning point because it also stretched the definition of what we call politics of possible. क्या संभव था, इसकी imagination जो थी, वो उस event ने stretch कर दी. Yeah? It was tested and demonstrated, this politics of possible. And what was this politics of possible? किस चीज़ की नई एक imagination create हो गई थी of unlimited potential of politics of retribution. कैसे जब state कुछ करने पे, violence करने पे उतर आती है, तो कितनी clearly, कितनी how the ranks will close, how the governmental ranks will close, and it will perpetrate violence. It showed that. And what was possible was being demonstrated in in the capitals of one of the largest democracies of the world. कहने के लिए हम लोग democracy इसके बारे में बात हो चुकी है, but I'll come back to this point. Now, this became a template for the Bombay killings in 1992 and also the Godhra program. Now, post-2002, we have begun talking about the Gujarat model, right? But one forgets that a model pre-existed in Delhi, and we can call it the Delhi model. Yeah. Now, more so, this was one point that has been raised, and I'm adding to it. Actually, मेरे हिसाब से 1984 का Sikh massacre का एक और महत्व है turning point की तरह. और वो है that it laid the grounds for the national politics to pivot to the right. We generally associate the rise of the right wing in India to the year 1991 with Advani's Yathrata. And लेकिन मुझे लगता है कि it's the political configurations amongst several things. It's the 1984 the massacre of the Sikh people that really, started this, laid the ground for the rise of the right wing. And how so? Why do I say this? Now, in the 1984 elections, there is a silent alliance between RSS and Congress. If you read Rashid Kidwai's book, Ballet's 10 Episodes of Indian Democracy, it talks about it. Now, BJP was formed in 1980, and its leaders, such as Advani, actually supported the Operation Blue Star. And one of the RSS leaders, Nanaji Deshmukh, wrote an article called Moment of Soul Searcher in this journal called Pratipaksh. And he praised Indira Gandhi for Operation Blue Star and blamed the Sikh leaders for the 1984 massacre. So you see coming together of different political parties, and I think सुबह भी ये कहा जा रहा था कि already इंदिरा गांधी ने वो mobilization शुरू कर दिया था, रुद्राक्ष पहनना शुरू कर दिया था, majoritarianism की बात करनी शुरू कर दी थी, and so a ground is being laid for actually what we are seeing now. So you can't tell the history of the present without referring back to 1984. So that's my point about it being a significant turning point in Indian politics. दूसरा है हम कैसे याद रखेंगे, बहुत सारी बात कही गई है, हमें याद रखना चाहिए, बहुत important है. But my question is, what shaped the memories of the families of the victims? जो survive करे, उनकी memories को किस चीज़ ने shape किया है? And इसका मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि जलियांवाला बाग के जो survivors थे, उनकी memories को कैसे, उनकी memories का क्या हुआ? What shaped their memories? So in 2019, on the 100th anniversary of Jallianwala Bagh, historian Nanak Datta went back to Amritsar and interviewed the family members of the victims and survivors. And this is what they had to say. तो एक दो मैं आपको बताती हूँ और फिर उसको 84 से जोड़ेंगे. So this man called Vijay Kohli says, मर गए जेड़े मरन वाले सी, कोई नहीं परवाह करदा. Another man said, कौन याद करदा है? And this is the utter disillusionment that the people, survivors of Jallianwala Bagh were talking about. And that was at the core of their memory. So what shaped their memory was not just the event of the massacre. What shaped their memory was the indifference of the successive governments, including the Indian one, to their own plight. And this deeply echoes the sentiments of the victims of the survivors of the 1984 massacre, the indifference, the sheer indifference.
एंड दूसरा इसमें जुड़ा है वो है ट्रॉमा, एक ट्रॉमा को इन्विजिबलाइज करा गया, जो उनका पेन है कहीं इन्विजिबलाइज हो गया है. That while the mainstream narrative has become obsessed with the numbers killed and the commission reports and the legalese, कि सरकार ने क्या नहीं किया, कोर्ट में क्या नहीं हुआ, it has become obsessed with that. We keep talking about it, right? But for the people who survived, it was their survival itself that became an issue. And their trauma was not just about the event, पर अब जिए कैसे उसके साथ? How do we move on? Because everybody is asking us to move on. And ये जो death थी, like, there was this scholar, Veena Das, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, उस दौरान उन्होंने रिलीफ कैंप्स में काफ़ी काम किया था. सम ऑफ यू मे नो अबाउट हर. शी रोट अ वेरी नाइस आर्टिकल अबाउट द वर्क शी डिड विद द विडोज एंड द चिल्ड्रन, एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन अराउंड 86, तो ये छपा था लगभग 1990 के अराउंड. So she says something that the women in these families, for them, the death of their family members violated the cultural ideas of what is a good death. एक अच्छी मौत का जो एक आइडिया होता है वही वायलेट हो गया था. ना इसको हम अच्छा कह सकते थे ना बुरा, वो तो आदमी मर गया उनका. They saw no heroism in these deaths. आज हम उनको martyrs बोल सकते हैं, but those women did not see them as such. Yeah, for them these were utterly meaningless and futile, deaths. And when a death like that occurs, what is the funerary form? What is the form of mourning? तो कई लोगों को तो डेड बॉडीज़ हाथ लगी. अभी मैं यहाँ बैठकर अजीत कौर का जो लिखा हुआ था कि एक महिला है, उसको अपने बेटे की आधी जली हुई बॉडी मिली, तो उसने फिर पूरे घर के लकड़ियाँ वगैरह निकाल कर उसका क्रिमेशन किया, वहाँ पर उसको वो बॉडी मिली. पर कई लोगों को बॉडीज़ ही नहीं मिली. एज सिद्धार्थ वाज सेइंग इन द मॉर्निंग, एविडेंस क्या है, डिनाइल किस पे बेस्ड होता है. तो दिल्ली की बहुत सारी पुलिस चौकियों में बॉडीज़ को लाकर जला दिया गया, वो बॉडीज़ मिली ही नहीं. और जहाँ पर जिसका SHO जो पकड़ा गया, जो एक्चुअली हो गॉट ब्लेम फॉर सेवरल थिंग्स बिकॉज ही डिड नॉट डिस्पोज ऑफ द बॉडीज़ इन टाइम, राइट. सो आई वांट टू क्विकली टेल यू द स्टोरी ऑफ शांति. या एंड शी इज़, आई नो त्रिलोकपुरी के बारे में ना काफ़ी लिखा गया है, पर सुल्तानपुरी के एरिया में भी काफ़ी ये दंगा काफ़ी ज़्यादा था उसका. इट्स सम थिंग्स गेट टॉक्ड अबाउट, सम थिंग्स डोंट. सो शांति वाज अ वुमन लिविंग इन सुल्तानपुरी. एंड ये सिकली घर हैं, कॉपर स्मिथ्स थे, पूरा लोअर कास्ट, एंड उसका बेटा, उसके 2 बेटे और पति को पकड़ लिया गया. एंड वो छुपने के लिए किसी ने, वही हुआ, छुपने के लिए गए, किसी ने बता दिया एक घर में छुपे हैं, और उस घर में आग लगा दी गई. एंड द किड्स मस्ट हैव रन अप टू द टेरेस and held on to each other as they were burnt. So when she found them, they were holding on to each other. So it's terrible. It's terrible to read all that. And after that, she had 2 daughters. But with the death of her children and her husband, her world had come to an end. वो 2 बेटियों को भी वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी. बड़ी बेटी पास में आती थी तो उसको मारने लगती थी वो, कि तूने रोका नहीं, तूने उनको रोका नहीं, तेरी वजह से मर गए. Because there was nothing she could hold on to. So here is Shanti, who was unable to get beyond what happened. Yeah? And आज हम ये इवेंट कर रहे हैं क्योंकि we feel we are obligated to the dead. जिनकी मौतें गई उनके प्रति हमारा कोई obligation है. All of us live with that. अरे वो कह के गई थी, माता जी कह के गई थी या कुछ. So we all feel obligated. What was her obligation to the dead? So in order to fulfill her obligation to the dead, the day her father-in-law went to the market and the children went to the school, she hung herself. Yeah, in that she made sure she had done her good by way of those deaths. So you see, this is the kind of trauma that no court can ever compensate for, no government can ever compensate for. And such trauma, nothing compensates for it first. But witnessing it and listening to it does help people get on with their lives. So as a community, I feel that yes, while the efforts to approach the state, approach the courts should continue, if there was more support for these, now for 40 years down, and obviously kids don't want to talk about this, they want to move on. Yeah, but can they move on when the trauma is lodged in your unconscious? So your past is something that is always going to have a hold on you. And it was also bothering me when I came here today, that there are some young kids in the audience, but not enough. Why didn't your grandchildren come with you? Why didn't you bring, आप जाते हैं गुरुद्वारा तो लेके जाते हैं ना, तो why are they not here? Who is going to be the memory keeper?
I, as a concerned citizen of Delhi, I am going to be your memory keeper. As a historian, I am going to be your memory keeper. But what about children of your community? Bring them in. They need to know. I know आप shield कर रहे हैं. I know you guys are protecting them. But till when? Yeah. So that, and the last, oh, its time is done. Okay. जल्दी से मैं conclude करती हूँ. तो एक मैं जो यहाँ बोल देना चाहती हूँ वो है untold story of sexual violence. वो अब हमें, मैं सुबह बुटालिया जी से, ऋषि जी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों को पता ही नहीं चला, बोला ही नहीं किसी ने. तो एक होता है, एक दौर होता है जहाँ हम साइलेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, राइट, नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, पर एक दौर आता है जहाँ साइलेंस को खोलना भी ज़रूरी है. हाँ, तो आई थिंक दैट इज दैट वी नीड मोर कॉन्वर्सेशन. सो नेक्स्ट टाइम यू होल्ड दिस इवेंट, please invite those people. Let's have more conversation about it. It needs to be talked about. Our collective shame, we need to embrace it. Shame हमारी नहीं है, उनकी है जिन्होंने किया ये. So let's talk about it. Yeah. Now, in conclusion, now what I've attempted to show is how the histories of Jallianwala Bagh and the 1984 massacre are twinned, how they are conjoined. Now, this leads me to the title of the panel. Was 1984 massacre a democracy's predicament? तो इस बात का जवाब देने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए मैं दोबारा जलियांवाला बाग का एग्जाम्पल लेती हूँ. तो जिस दिन ये हुआ जलियांवाला बाग का कांड, उसके पहले एक मुनादी वाला पूरे शहर में घूमता हुआ, ढोल पीटता हुआ मुनादी कर रहा था. और मुनादी थी, खलकत खुदा की, मुलक बादशाह का, हुक्म जनरल डायर का. तो ये डायर जो है समय समय पे बदलता रहा है, हर दौर का अपना डायर हुआ है. डेमोक्रेसीज ऑल्सो, आजकल हम उनको डंकापति कहते हैं, डायर नहीं डंकापति. द मॉरल, सो डेमोक्रेसीज हैव देयर ओन टिरनीज एंड देयर ओन टायरेंट्स. एंड द मॉरल चेक ऑफ द डेमोक्रेसीज, जैसे अगर हम उसका बैरोमीटर चेक करना हो कि डेमोक्रेसी ठीक चल रही है कि नहीं, सो वी शुड सी हाउ इट ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज, वी शुड सी हाउ इट ट्रीट्स इट्स डिसेबल्ड, द क्वियर एंड द हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड. The Sikh massacre actually holds up a mirror to Indian democracy. Now मैंने ना इसको अपना पूरा वक्तव्य ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी कविता मैंने सोचा था पढ़ दूँगी, क्योंकि काफ़ी हेवी हो गया है, right? And I thought I wanted to end my thing on a note of hope. So if I have the chair's permission, I'll quickly read out a small bit of poem. तो ये आप जानते हैं इस कविता को, बस पढ़ देना चाहती हूँ कि मुझे लगा कि थोड़ा भारी, थोड़ा कम लगेगा. I want to be able to say that no, we will go on. राइट. तो ये कविता पाश की है. पाश को आप सब जानते हैं. हाँ, उसको भी रेडिकल था तो उसको मार दिया गया था 89 में. नाउ somehow I felt that this poem captures the fact that all of us have come together today and borne witness to history. हम लोग भी witnesses हैं, जो उस दौरान के लोग थे, हम लोग भी हैं. तो जल्दी से पढ़ देती हूँ. कविता का नाम है मैं घास हूँ. मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा. बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूँ, हर चीज़ पर उगाऊंगा. बंगे को ढेर कर डालो, संगरूर मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना जिले को, मेरी हरियाली लेकिन अपना काम करेगी. 2 साल 10 साल बाद सवारियाँ फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी ये कौन सी जगह है, मुझे बनारा उतार देना जहाँ हरे घास के जंगल हैं. मैं घास हूँ, अपना काम करूँगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा. लंच काफ़ी ठंडा हो रहा, भुख भी सानू बड़ी लगी हैगी. तो मैं 5 मिनट बोलूँगा, मैं चेयर में भी सुनना चाहूँगा. 2-3 पॉइंट है क्योंकि मेरा नंबर लगे इस वास्ते बोलना चाहिए. सो आई बिगिन विद फराज स्टेटमेंट. फरा पहली जी स्पीकर सी, अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू लीव. उन्हें कहा कि इस शहर दे विच काफ़ी सारे नॉन सिख भी हैगे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ. ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਿਆ, तो she was saying that there are lots of non-Sikhs in this city who would not let it to be forgotten. I'm not very sure. ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. So I think we should recognize that, it's not, we are not living in a thriving democracy. So we are in very cynical. चलो, थैंक यू वेरी मच. सानू नहीं से पता, मोबिलाइज करना चाहिए, होर भी होने चाहिए.
ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਮਚ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਵਾਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। Another reason for that is that it makes us recognize the fact that our state is still a colonial state, or significant part of the Indian state is still a colonial state, which includes your judiciary, which includes your police, which includes our own attitude in terms of, divisions that we have in our society. ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਢੀਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So we are still living in a colonial state. I think that is something which comes out very clearly. ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ 1984 ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪਰਹੈਪਸ ਮਚ ਵਰਸ ਆਫ ਦੈਨ 40 years। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। We have become much worse. Institutional framework of Indian state has become more anti-people than it ever was before. ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਬੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ 80% ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, rights and justice, not of minority rights, not of dividing. Minority majority wala narrative in itself, we need to come out of it. ਇੱਥੇ ਕੋਈ majority ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Everyone has to be a citizen of India. Sikhs are citizens of India. We are not a minority of India. You treat us as demographic minority, which we are numerically, but Sikhs are not a minority. ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ minority ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ that we can get out of the colonial narrative. ਇਹ minority majority ਸਾਨੂੰ colonial ਰੂਲਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ 7% ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ colonial ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਈਡੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। When the 84 riots took place, I was in Bombay. I missed not carnage really, I missed the genocide, the ethnic cleansing of Sikhs in Delhi.
I came with my friends from time to time, went to some areas and then went back. But many years later, when Paramjit Kaur Kalra's case came to the Supreme Court, and the Supreme Court sent it to the NHRC to look at compensation, my friend Navkiran Singh, who's there at the back of the audience now, and I'm eternally grateful to him for that, he got me involved in that case before Dr. Anand, who was the chairman of the NHRC. We did a lot of hard work. We gave all the evidence. We gave the names of all the victims. And at the end of the day, you cannot imagine what we got as compensation for those who were killed. Dr. Anand gave us 2 lakhs, a princely sum of 2 lakhs for deaths. And then a little later, when we pointed out that their bodies were cremated without telling their parents and without handing their bodies over to their parents, he gave us another princely sum of 1 lakh by way of compensation. And if you understand that this was given sometime in the 90s, late 90s, and the killings took place maybe 30 years earlier, if you count interest at 6%, we probably got 500 rupees for a death and maybe 250 rupees for denying them their burial rights under Sikh customs. What a shameful experience it was for me, and what a shameful period for the NHRC. If there is one line of occurrences that cover all the riots from 84, all the ethnic cleansing, genocide riots, call it whatever you want, from 1984 till the present riots in Manipur, it is the shameful role of the judiciary and of the chief justices who presided over the Supreme Court during that period. There's no doubt about it. And there's one person who said from the audience a little while ago, say sorry, Supreme Court, say sorry. And I think the time will come when the court will be forced to apologize. It's not unusual for governments to apologize 20, 30 years later for their treatment of people who they were to protect and who died when they had the power to protect them. What was incredible also was the counter-affidavit filed by the Punjab police. Little known, I think. They said, yes, we had the boys in our custody. It wasn't as if they took the defense that there was a firing between the police and the so-called terrorists, and then the Sikh boys died. No, he said, we had them in our custody. We held them in front of us. And we went to the areas where the terrorists were lurking. And we wanted them to point out to us where the terrorists were. And the terrorists opened fire and the boys died. So the open declaration that boys were used as human shields, which is a war crime. The Israelis do it, always with the Palestinians. And you remember that BBC footage of the Palestinian captive tied to a jeep of, the Israelis as they went through certain areas using Kashmir. So India is a shameful country in that sense. We can say openly we use them as human shields. Hey, sir. Sir. So I don't think you know what meeting you are in here. Just wait, sir. Sir, 1 second. No, sir. Sir. No, 1 second. 1 second, sir. Let me. Sir, 1 second. Sir, I assure you, because I'm. Wait, sir. Wait, sir. No problem. I grew up in a custom of people interrupting meetings, and I interrupted often. Sir, I assure you, after that gentleman finishes for 2 meetings, I'll give you a chance as well. All right? Fair enough? 2 minutes chance for you. He'll let him speak. It's all right, not a problem.
Wait, sir, wait. Now let me finish. I want my 10 minutes. Yes, sir, yeah. So that was the NHRC with Dr. Anand, a brilliant judge, otherwise a very fine judge, very good judgments and so on. From Dr. Anand down to Arun Mishra, the pathetic role of our NHRC. In 1991, we saw the Bombay Carnage, you can say genocide. It was directed against the Muslim community. Justice Suresh, now dead, played a masterful role in that, and he took judges with him. He went to the areas where the Muslims were killed. He held people's tribunal in public and in slum areas and so on. The finest judge you could find, that we could find as young people, with all our anger and resentment against government and the police, the finest judge that we could find. Justice Sri Krishna played a very important role and made one of the only, I think, commission of inquiry reports that was spectacular. Went to the area, vilified by Balasaheb Thackeray and his group. This is not by some people, not by, that he's a Hindu judge, how can he do justice to Muslims? That was what was told to him. And Sri Krishna did such a fantastic report, beautiful report. In that report, I'll look at one aspect. He made a list of 25 officers, very senior officers of the Bombay police, who participated in the killings and actually killed Muslims in the frenzy that happened. Nobody implemented that report. Many years later, we took it to the Supreme Court on the simple point that this is the list of the officers who Sri Krishna found had actually opened fire on Muslims and helped the mobs to kill Muslims. They're alive. They're all here. Isn't it time to punish them even though it's late? And the Supreme Court let us down. Too late. Many of them have retired. Yeah, and it's a weak excuse. I must tell you, in international law, it is not uncommon. When states participate in genocide and ethnic cleansing, it's not uncommon that many years pass from the killings to justice being done. And in many countries in the world, justice has been done 20 years later, 30 years later, and people have gone to jail many years later for the crimes that they committed. Manipur, now we come to recent day, and the killing of the Kukis or tribals, supported by the Home Minister of India, supported by the Chief Minister of the state, supported by the Home Minister of the state, and supported by the police force. All from the same Maitai community, though the Maitai community is very fine people who stand up for justice. In May 23, last year, we approached the Supreme Court and said, bring out the army. Please bring out the army, because the police are participating in the killings, the Chief Minister is involved in the killings, the Home Minister of the state, and the Home Minister at the center. And Chief Justice Chandrachud told me, he scolded me, never in 70 years have we called the army out. Has the Supreme Court directed the army to keep law and order? And we don't intend to begin now. All right, May 23. Today as we stand, that number of killings have gone up from 15 in May 23 to 210 today. What would you say to a judiciary that has the power to stop the killings on the spot? You have the power. You alone have the power to stop it. And you don't do it. He was wrong, actually, when he said we have never called out the army. In the Kandamal killings of Christians, we moved the court on Monday morning. Justice Balakrishnan was Chief Justice of India.
Monday morning, we moved the Supreme Court and said, the assailants planned to bring Mr. Togadia to Orissa in 3 days' time. And he plans to do a Kalash Yatra through the communities and burn the huts on either side. And look at what a judge can do. He said, ask Mr. Gopal Subramaniam, the Solicitor General, to come to court with instructions at 2 o'clock. See how the case went. Morning 10:30, 2 o'clock Gopal Subramaniam, one of the finest Solicitor Generals we ever had. You can compare him to today's case. You can really compare him to today's case. And he told Justice Balakrishnan, after he had stayed, he said, Mr. Togadia will not enter Orissa. Pass the order. And then he asked Mr. Gopal Subramaniam, sir, what do you say to the idea that the army should be called out? And Gopal Subramaniam said, sir, as we speak, the paratroopers are in the air. Can you imagine the power of the Supreme Court if you want to do something to do it? And the awful consequences that follow, the genocide that follows if a Chief Justice keeps silent. Delhi riots, where Anurag Thakur and his friends, Parvesh Verma and all of them, we caught him on camera at a public function saying, and asking people to chant after him, Desh ke gadaro ko goli mar salo ko. We got him on camera. Then we got him on camera again repeating it as he went throughout Delhi. We went to the High Court and filed the case. High Court judges were not willing to touch the case. Not their fault. Not their fault. They could see what happened to Justice Muralidhar when he took up the case. Huh? Not their fault. Judges are afraid to stand up to government and then take the consequences. Good judges also. Anyway, High Court didn't take it for 1-2 years. We went to the Supreme Court. We said, sir, we are filing a writ petition. He said, why are you coming directly to the Supreme Court? We said, sir, because the High Court hasn't taken our matter for 2 years. It was adjourned and adjourned and adjourned and adjourned. Supreme Court also didn't have the courage to take it. I'll tell you openly. Didn't have the courage to take it. And I feel very bad about that. Because you have the power to stop the killings and you didn't have the... Sent us back. And that Delhi High Court case asked for a simple demand that an FIR should be registered against Anurag Thakur and his friends. Justice Muralidhar, it happened to come before him. It was just a stroke of luck. It was actually before the Chief Justice's bench. I think he was absent that day. It came before Justice Muralidhar's bench. And he took it up immediately. He looked at the photographs, he looked at the slogans and said, this is straight off. A cognizable offense, you'll have to register an FIR. Yes, sir. Yes, sir. Then, yes, of course. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And he looked at it. There was a to and fro between Tushar Mehta and Justice Muralidhar. Muralidhar was very polite, very firm, but he said, you have to register an FIR. Tushar was getting hot under the collar, getting a little agitated. And then he said something, and I think both Justice Muralidhar and I made a mistake there. He said, give me time till tomorrow morning. And I saw him go out of the court in a huff. He was very angry. He was very angry that there's a judge to stand up to him and say, you will register an FIR against a sitting cabinet minister. And of course, members of parliament who uttered that slogan. He was very angry. And now today we heard, what I didn't know was that in the evening, I think 8, 9 o'clock, 10 o'clock, he was asked to go. I felt, perhaps now in retrospect, the bench, it's very difficult to decide these things, should not have granted the adjournment. Argue now, take instructions now, argue now.
Perhaps even Justice Muralidhar could not have imagined that in the night he would, or in the evening he would get that transfer order. It's not a normal transfer. It was transfer designed to interfere with the proceedings before the High Court. So I blame myself later. I blame myself. I said I should have had the courage to go to the Supreme Court immediately. Win or lose, it didn't. I should have gone to the Supreme Court immediately and said, this is gross interference with the proceedings of the court. Bring him back, let him finish his case, then send him wherever you want to do. I didn't have that good thinking. I didn't have the courage to say that. And so this is the Supreme Court that we must stand up to. And as Justice Chandrachud leaves, he leaves as part of the same tendency that didn't have the courage to stand up to the government in the Manipur massacres and didn't have the courage to do anything in Delhi riots, which took place under his watch, and also Jamia, where 100 students were brutally beaten with fractures and one person lost his eye and so on. We really have to say to the Supreme Court, and with that I end, Supreme Court, nothing else. The citizens of this country ask for nothing else. Simply say sorry for all the sins of the past. Kindly, please. Alex Sahab, please. We have Mr. Malhotra here, Majid Singh Malhotra. We have Dr. Bhatti here. Please bless the children. So Inder P. Singh ji, please come and come bless the children. Please come. Come. Hi. So side by side, you give a vote of thanks. President was supposed to be there. He is busy with the children now.